Hello my dear students, I hope you all are doing well with your CA final preparations. You are giving your best and I wish best of luck for clearing these exams. So my dear students, as our institute has come up with RTP for May 22 attempt, let me discuss some of the problems, or I'll say all the problems, but some of the problems we'll be discussing more the way we have our solutions for all those problems. So let's start with RTP discussion of financial reporting for May 22 attempt. Now the first part, वो चैप्टर है जो हम लोग सब ऑप्शन में छोड़ता है, conceptual framework. Of course, because that concepts have already been built up at foundation, inter, but then also we have a chapter. अब ये चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन है. Let me go with this question with you. Defense Innovators Limited is a public sector undertaking and is engaged in construction of warship and submarines. XYZ Private Limited approached Defense Innovators Limited for construction of specifically designed ships for it, which will be used by XYZ Private Limited for transportation of specific goods. So, दो company, Defense or XYZ. The offer was accepted by Defense Innovators Limited and both the companies entered into an agreement for construction and delivery of 3 specifically designed ships on fixed price basis with variable component in respect to certain items. Base and depot B&D spares for all the 3 ships shall be procured by Defense Innovators Limited and will be paid on the cost of the item with certain percentage. The contract states that certain equipments out of variable cost items will be supplied by XYZ Private Limited at free of cost for installation on the board of ship. It is therefore to be noted as under. Some equipments are procured by Defense Innovators Limited in presence of the XYZ Private Limited representative for technical scrutiny as well as negotiating the prices. The vendors of these equipments are paid by Defense Innovators Limited. The cost of the equipment along with the cost of installation and profit thereon is claimed and reimbursed by XYZ Private Limited to Defense Innovators Limited. Okay, profit is thereon claimed and is reimbursed by this. There are certain other equipments for which orders are directly placed and also paid by XYZ Limited. The equipment are known as buyer furnished equipment BFE and are delivered to the company free of cost for installing in the ship. The labor cost of installation of this are already included in the price component of the contract. The buyer furnished equipment are returned to the buyer after completion of the ship. The period required for construction of ship was approximately 4 years. Whether the cost of buyer furnished equipment supplied by XYZ Private Limited to Defense Innovators Limited for installing the same in the ships can be considered as inventory by Defense Innovators Limited, and then on delivery of ship will it be recognized as revenue in the books of accounts. Elaborate. तो डियर स्टूडेंट्स, पूरा कहानी देखो क्या आया इसमें. डिफेंस है और XYZ है. XYZ ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमको शिप्स बना के दो, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन सर्टन इक्विपमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कहता है उसमें वेरिएबल रहेगा. certain equipments out of variable cost items will be supplied by XYZ Private Limited at free of cost for installation on board of ship. Okay, डिफेंस इनोवेटर प्रोक्योर करता है कोई गुड्स, XYZ वाले लोग साथ में आएंगे नेगोशिएशंस के लिए. द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट अलॉन्ग विद इंस्टॉलेशन प्रॉफिट देयरऑन इज claimed and reimbursed by XYZ Private Limited Defense Innovator. दूसरा पॉइंट बोलता है there are certain other equipments for which orders are directly placed and also paid by XYZ Private Limited. These equipments are known as buyer furnished equipment and are delivered to the company free of cost for installing in the ship.
अब ये जो बायर फर्निश्ड इक्विपमेंट है, क्या ये इन्वेंट्री है? इज दिस इन्वेंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री है तो हम इन्वेंट्री में AS2 का पॉइंट आता है, Ind AS 2 टू बी प्रिसाइज। Ind AS 2 क्या बोलता है? इन्वेंट्रीज आर असेट्स held for sale in ordinary course of business. In the process of production, raw materials and supplies to be used or consumed for production. अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये असेट है कि नहीं है, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेंट्री तभी होगा प्रोवाइडेड वो असेट होगा। तो इफ यू लुक प्रॉपरली, ये BFE दैट इज बायर फर्निश्ड इक्विपमेंट वो XYZ ने हमको भेजा है, और BFEs are to be returned to buyer after completion of the ship। तो बरोबर से देखेगा ना, तो मैं इधर एक एजेंट जैसा ही काम कर रहा है। मुझे उसने बोला है कि ये तुम शिप बनाते वक्त हमारा ये इक्विपमेंट इसमें फिट करके देना, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस इक्विपमेंट and I don't have a control over this equipment, because at the end I have to return back this equipment to the entity XYZ। मतलब हमारा कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। असेट बनने के लिए फ्रेमवर्क क्या बोलता है? द फ्रेमवर्क ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेज दैट एन असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम वेयर इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। कंट्रोल है, मतलब ये जो असेट है, इसका जो रिसोर्स का सबका सब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मैं लेगा, और दूसरा आई कैन रेस्ट्रिक्ट अदर्स द एक्सेस ऑफ दोज बेनिफिट्स, देन आई कैन से आई हैव कंट्रोल। अब इसमें हो क्या रहा है, दैट दोज BFEs आर इंस्टॉल्ड by us and then they have to be returned। अब ये इन्वेंट्री तो है ही नहीं, बिकॉज इट डज नॉट फिट द डेफिनेशन ऑफ असेट। असेट होता तो मैं आगे बोलता था इन्वेंट्री है, असेट के डेफिनेशन में ही नहीं बैठ रहा है, सो हाउ कैन आई से इट इज अवर इन्वेंट्री? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो इन लोग ने पूछा है, फर्स्ट इज कैन बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री, आंसर इज नो। जब डिलीवरी ऑफ शिप हो जाएगा, विल इट बी रिकॉग्नाइज्ड इन एज रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो। यू विल से व्हाई सर? बिकॉज यहां पे इफ यू रीड द क्वेश्चन से ऊपर का पार्ट कुछ काम का नहीं, जो था वो अपना इधर से ही चालू हुआ था, सेकंड पॉइंट से। देयर आर सर्टेन अदर इक्विपमेंट्स फॉर विच ऑर्डर्स आर डायरेक्टली प्लेस्ड एंड ऑल्सो पेड बाय XYZ प्राइवेट लिमिटेड। These equipments are known as buyer furnished equipment and are delivered to the company free of cost for installing in the ship। बराबर है? Labor cost of installation of this is already included in the price of the component of the contract। BFEs are returned। इसका मतलब देख, BFE का जो भी कॉस्ट होगा cannot be considered as part of sales value, because the ये एक टाइप का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बेली जैसा है रे, तुमने बोला है मेरा काम करके देना, मैं करके देगा, तो मेरा इन्वेंट्री कैसे हो सकता है? और उसमें मेरा रेवेन्यू क्या, जो भी लेबर चार्ज है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूडेड है। या सो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क आई कैन से दिस इज नॉट एन असेट ओनली, बिकॉज इन्वेंट्री के लिए वो असेट होना चाहिए, ये असेट में ही नहीं बैठ रहा है, एंड वी विल नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर द सॉल्यूशन given by the RTP। The orders in respect of buyer furnished equipment are directly placed by the buyer and payment in respect is made by the buyer. Then these are supplied to the company for installing in the ship and the buyer pays installation charges which are included in contract price. Thus the company has neither incurred any cost on BFE nor any amount is recoverable on account of such equipments except installation charges. Accordingly, such equipments are not assets that may be considered as part of contract work in progress. In fact, after installation of ships in the ship, BFEs are returned to the buyers of the ship. Thus, these are only held by company in the capacity of a bailee. Since it cannot be considered an asset, therefore it cannot be considered as inventory nor as work in progress. ठीक है बेटा, यहां तक हमारा पॉइंट हो गया। दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन्वेंट्री, और इसका कोई रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज नहीं करने का। क्यों रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करने का? सर मेरा जो भी है वो सर्विस चार्जेस है,
लेबर चार्जेस है विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. ये इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड है. Entity manufactures passenger vehicles. It's the same type of question you have it in our textbook also. The time between purchasing of underlying raw material to manufacture the passenger vehicles and the date the entity completes the production and delivers to its customer is 11 months. Customer settles the due after a period of 8 months from the date of sale. Will the inventory and trade receivable be current in nature? Assuming the production time was 15 months and the time lag between the date of sale and collection from customer is 13 months, will the answer be different? सबसे पहला तो तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? व्हाट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल? कैन आई से ऑपरेटिंग साइकिल का मुझे डेफिनेशन देना पड़ेगा. तो क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? कैन आई से द पीरियड फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ एन असेट टिल इट गेट्स रियलाइज्ड इनटू कैश. जैसे मैंने कुछ असेट अक्वायर किया, रॉ मटेरियल अक्वायर किया, कितना टाइम में वो मेरा कैश बन जाएगा. दैट पीरियड इज रेफर्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल. एंड एन असेट इज कंसिडर्ड बी करंट. वो 4 कंडीशन था. It is expected to be settled within the normal operating cycle, consumed within normal operating cycle. It is expected to be settled within 12 months from the date of reporting. It is held for trading and it is cash and cash equivalent. तो ये 4 कंडीशन है तुम्हारा which is given under Ind AS 1. तो पहला तो इधर ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? So can I say it is nothing but the time between purchasing of raw material to manufacture the passenger vehicle and date the entity completes 11 months और कस्टमर 8 महीने में देता है 19 months. My operating cycle is 19 months. अब will the inventory and trade receivable be current in nature? Yes, if they will be realized within 19 months, they will be current in nature within operating cycle. Assuming production time was 15 months and the time lag between date of sale and collection is 13 months. So can I say my operating cycle is 28 months? So if inventory and debtors will be realized in 28 months, they will be considered as current. Time lag between purchase of inventory and realization. इसका आंसर है हाँ ये? No, the answer will be same. That is classification of debtors and inventories depends on expectation of the entity to realize the same in normal operating cycle. In this case, the time lag is 28 months. Both inventory and debtors will be classified as current if the entity expects to realize these assets in normal operating cycle. Chalo. We move on to the third question. Fresh Vegetables Limited (FVL) was incorporated on 2nd April 20x1 under the provisions of Companies Act 2013 to carry on wholesale trading business in vegetables. As per audited accounts of financial year ended on 31st March 7, approved in its annual general meeting held on 31st August 2007, its net worth for the first time since incorporation exceeded 250 crores. The financial statements since inception till financial year ended 31st March were prepared in accordance with Company Accounting Standard Rules 2006. It has been advised that henceforth it should prepare its financial statements in accordance with Company's Indian Accounting Standard Rules 2015. The following additional information is provided by the company. FVL, that is Fresh Vegetables Limited, in the financial year 23 entered into 60:40 partnership with Logistic Limited and incorporated a partnership firm Vegetable Logistic Associates VLA to carry on logistic business of vegetables from farm to market. FVL also has an associate company Social Welfare Limited SWL that was incorporated on July 2005 as a charitable organization and registered under Section 8 of Companies Act 2013. Social Welfare Limited has been an associate company of FVL since its incorporation. Examine the applicability of Ind AS on VLA and SWL. Now my friends, ये है अपना applicability of Ind AS. If you remember, हमने वो रोड मैप सीखा था. उस रोड मैप के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनीज को Ind AS एप्लीकेबल नहीं होगा. But all other companies will be covered provided they are listed or in the process of listing of their securities on a stock exchange, whether in India or outside India. मतलब listed entities तो सब आ गया. All listed entities are covered. या तो जिन लोग ने प्रोसेस चालू किया लिस्टिंग का. दूसरा, नॉन लिस्टेड
entities whose net worth is 250 crores or more, इनको भी इंड एस एप्लीकेबल हो गया फेज 2 के बाद तो। एंड होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव, ये 3 पॉइंट हमने लिखा था। तो जब हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहां पे तो फ्रेश वेजिटेबल्स जो है उसका 31st March 7 अप्रूव्ड इन एनुअल जनरल 31st August फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सीडेड 250 करोड़। मतलब कहने से इंड एस एप्लीकेबल हो गया इसको। फ्रेश वेजिटेबल्स लिमिटेड हैज टू अप्लाई इंड एस बिकॉज इट नेट वर्थ एक्सीड्स 250 करोड़, खत्म। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वेजिटेबल लिमिटेड हैज टू अप्लाई इंड एस, बट उसका एक पार्टनरशिप फॉर्म है। FVL has entered into financial year 23. FVL has in the financial year 23 entered into 60-40 partnership with Logistic Limited और एक फर्म बना ना वेजिटेबल लॉजिस्टिक। तो क्या ये जो फर्म बना है ये मेरा कवर होगा कि नहीं होगा? हमने लिखा है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट पेरेंट ऑफ द अबव, मतलब ये जो क्राइटेरिया में बैठ जाता है उसका होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट विल बी कवर्ड, जॉइंट वेंचर विल बी कवर्ड। लेकिन यहां पे देखना पड़ेगा कि सर ये जो वेजिटेबल लॉजिस्टिक एसोसिएट है वेदर इट इज अ जॉइंट वेंचर प्रिंसिपल्स ऑफ इंड एस 28 और इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन इन प्रिंसिपल्स ऑफ इंड एस 111। अगर ये जॉइंट ऑपरेशन है wherein the venturers are just having rights to the assets and liabilities, venturers are having rights to the assets and liabilities, then we say sir it is joint operation, and in that cases Ind AS is not applicable. But they are not having rights to the assets and liabilities, but they are having interest in the entity, wherein it is a joint control, where decisions are made based on unanimous consent of all the parties. अगर ये joint venture है, with this we have to identify ना, FVL ने जो VLA बनाया है वो joint venture है कि joint arrangement है? Joint arrangement है तो Ind AS will not apply. If it is joint venture then it will apply, because my friends we wrote down holding subsidiary associate joint venture of the above, we didn't write joint arrangement of the above, it is joint venture of the above. तो अगर ये joint venture है तो applicable होगा, joint arrangement है तो applicable नहीं होगा। चलो फिर एक और एसोसिएट कंपनी बना है सोशल वेलफेयर लिमिटेड, क्या उसको इंड एस एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली सर सेक्शन 8 कंपनी है, फर्क नहीं गिरता है। यू आर ए सब्सिडरी खत्म, वेदर यू आर सेक्शन 8 दैट इज ओके, चैरिटेबल रहेगा ओके, बट यू आर नाउ कवर्ड बाय इंड एस बिकॉज योर पेरेंट is covered by Ind AS. This is associate, so obviously we are investor, not the parent word is not proper, I'll say we are investor. तो हमारा associate है वो आ ही जाएगा। Yeah, so answer is yes, they will be covered. Currently Ind AS is applicable to all following companies except for companies other than the banks and insurance companies on mandatory basis. All companies which are listed or in process of listing in or outside India on stock exchange. Unlisted companies having net worth of 250 crores or more but less than 500 crores, holding subsidiary, associate and joint venture of the above. Of course, additional point, जो company listed on small and medium exchange है, SME exchange, they are not required to follow Ind AS. Once you adopt independently or since voluntarily, then every year you have to continue with Ind AS. And it will be applied to both standalone and console. Yeah, this is our theory part only. Net worth of FVL in the immediately preceding year exceeded 250 crore. Hence, Ind AS is applicable to it. Now, बात होता है VLA का और SWL का, जो हमारा सब्सिडरी है। VLA is a joint partnership firm जैसा है, हमने पार्टनरशिप किया है
और SWL is a associate. पहला VLA का बात किया. Joint arrangement can either be a joint operation or joint venture. However, the purpose of identifying applicability of Ind AS, the Act defines joint venture as an explanation to section 2(6) of the Companies Act as follows. Expression joint venture means an arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Accordingly, if the entity is classified as joint operation and not a joint venture, then Ind AS would not be applicable. Or agar VLA, if partner conclude that they have rights in the assets and obligations for the liability relating to partnership firm, then this would be a joint operation. However, Ind AS will not be applicable on VLA in such case, since it is the case of a joint operation and not joint venture. Applicability on SWL. Social Welfare Limited is associate company of FVL. Accordingly, Ind AS would be applicable to SWL. उसमें तो कोई बांध छोड़ी नहीं है. Irrespective of the fact that SWL has been incorporated as charitable organization. ठीक है फ्रेंड्स, let us now move on to question number 4. देखो तीनों क्वेश्चन देखेगा तो थियरी बेस्ड था. अब हम आते हैं 115 वाला क्वेश्चन. On 1st April 2001, S Limited enters into contract with Corp Limited, the Corporation Limited, to construct heavy duty equipment for promised consideration of rupees with a bonus of rupees if the equipment is completed within 24 months. At the inception of the contract, S Limited currently accounts for promised bundle of goods and services as a single performance obligation in accordance with Ind AS 115. At the recognition of the contract, the company expects the cost to be rupees and concludes that it is highly probable that a significant reversal of amount of cumulative revenue recognized will occur. Completion of heavy duty equipment is highly susceptible to factors outside the company's influence, mainly due to difficulties with the supply of components. On 31st March 2002, S Limited has satisfied 60% of the performance obligation on the basis of cost incurred to date and concludes that variable consideration is still constrained in accordance with Ind AS 115. However, on 4th June, the contract is modified with the result that fixed consideration is expected to increase by 150 and 80,000 respectively. Cost will increase and the cost will increase by 80, fixed consideration 150. The time allowable for achieving the bonus is extended by 6 months. Will result that S Limited concludes that highly probable that bonus will be achieved and that contract remains a single performance obligation. S Limited wants your opinion in the accounting treatment of the contract with Corp Limited in the light of Ind AS 115 for the year 1-2 and for the year 2-3. पढ़ लो एक दफा, read it minutely. ठीक है फ्रेंड्स, हैव यू रेड इट? नाउ आफ्टर रीडिंग दिस तुमको एक डाउट आया रहेगा, बरोबर है सर, क्वेश्चन हमने भी पढ़ा लेकिन एक तकलीफ दिखा. क्या तकलीफ दिखा? सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दिया, बिकॉज यहां पे क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन हैवी इक्विपमेंट और अ प्रॉमिस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज विद अ बोनस ऑफ रुपीज. बोनस कितना, प्रॉमिस कंसिडरेशन कितना, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. At the inception of contract, S Limited correctly accounts for the promised bundle of goods and services is a single performance obligation. ये single performance obligation, multiple नहीं है, समझा? अगर single performance obligation, of course, revenue will be recognized over a period of time. At the inception of the contract, company expects the cost to be in rupees. कितना rupees? ठीक है.
and concludes that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will occur. Completion of heavy duty equipment is highly susceptible to factors outside of the company's influence, mainly due to difficulties with supply of components. मतलब कहीं ना कहीं पे ये जो बोनस है ना मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस उसके बारे में कह रहा है. तो माय फ्रेंड्स मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, तो मैं बोलता है ये आईसीआई ने सॉल्यूशन में ये अमाउंट लेके किया हुआ है, हेंस आई एम गोइंग विद दैट कि दे हैव कंसीडर्ड दिस टू बी 20 lakhs. बोनस दैट इज नथिंग बट इंसेंटिव 2,50,000 और जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो दिया गया है 11 lakhs. These are the three figures which they have considered while doing the solution, but the same have not been given while the question is here. S Limited enters into a contract with Corp I Limited to construct heavy duty equipment for a promised consideration of rupees 20 lakhs with a bonus of rupees 2,50,000. बरोबर है? At the inception of the contract, S Limited correctly accounts for the promised bundle of service. ये तो ठीक है. अब देखो क्या लिख रहा है वो लोग. At the inception of the contract, the company expects the cost to be rupees. कितना? तो वो अपने करवा दिया उधर 11 lakhs है, and concludes that it is highly probable that a significant reversal in amount of cumulative revenue recognized will occur. It is probable that reversal will happen. So whether I will be able to get the performance or not, मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं, बोलते हैं रिवर्सल हो सकता है भाई. I hope you now understand. अगर reversal, if it is probable that there is a chance of that reversal happening of the revenue which is already recognized, then don't recognize that revenue only na. In March 2002, S Limited has satisfied 65% of performance obligation. बेटा 65% ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया है. तो सबसे पहले व्हाट शुड बी द ट्रांजैक्शन प्राइस कंसीडर्ड ऑन इंसेप्शन. मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस कितना होना चाहिए इंसेप्शन में? 20 lakhs और शुड आई कंसीडर 2250? ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कैन हैपन. तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू 20 lakhs. अब मेरा 1-2 में क्या क्या चीज आएगा? बिकॉज मॉडिफिकेशन 1-2 में नहीं हुआ है. ये जो भी मॉडिफिकेशन का बात कर रहा है ना वो बाद में हुआ है 4 जून 2002 को. और देखो ट्रांजैक्शन प्राइस इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे तो 20 lakhs है. फिर मैं बोलता हूं सर ये तो अब कब था? से 1 अप्रैल 2001 को जब ट्रांजैक्शन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया था तब था. क्या 31 मार्च 2002 को भी ट्रांजैक्शन प्राइस 20 lakhs है कि वो बढ़ गया है? तो मुझे वापस डाउट आएगा कि सर वो जो रेवेन्यू अगर मैं रिकॉग्नाइज करेगा सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होने वाला है तो 2250 है. लेकिन क्वेश्चन पढ़ेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा. इट सेज it has satisfied 65% of the performance obligation on the basis of cost incurred to date and concludes that variable consideration is still constrained in accordance with Ind AS 115. Still constrained मतलब आज भी वही constraint है that there will be reversal. इसका मतलब I will not revise my transaction price. So what should be the revenue I will recognize for 1-2? Can I say 20 लाख का 65%? और कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज करेगा? तो 11 lakhs का 65%. Nothing but 13 lakhs. $11 lakhs का 65%. 7,15,000. So what is my profit for 1-2? 5.85. ये होना चाहिए प्रॉफिट फॉर 1-2. बरोबर है. अब आया 2-3. What will happen in 2-3 फ्रेंड्स? देखो सबसे पहले 2-3 में हुआ क्या? 4 जून 2002 the contract is modified
with the result that the fixed consideration and expected cost increase by 150 and 80,000 respectively. The time allowed for achieving the bonus is extended by 6 months with the result that S Limited concludes that it is highly probable that the bonus will be achieved and that the contract remains still a single performance obligation. अब देखो यहाँ पे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब वो तो कुछ अपने को प्रॉब्लम ही नहीं है. I will account for this contract modification. It is still a single performance obligation. मतलब जो भी modification है that does not result in additional goods and services. If it would have been resulted in additional goods and services, I would have accounted it as a separate contract only. But can I say now I will account it as a part of this contract through cumulative catch-up adjustment I can say. तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल सर. अगर मैं 2-3 में जाएगा तो अभी मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस कितना हो जाएगा इन 2002-2003 कितना का ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगा. तो इनिशियली 20 lakhs का तो था ही, वो तो रहेगा ही फिक्स प्राइस, लेकिन देयर इज सम मॉडिफिकेशन जो उसमें ही हम ऐड कर देंगे. सो मॉडिफिकेशन से कितना ऐड हुआ बच्चा लोग? इट इज 150,000. सो मॉडिफिकेशन विल बी 150,000. बरोबर है. प्लस बोनस. क्यों बोनस क्यों ऐड करने का? बिकॉज मैंने वो पीरियड बढ़ा दिया. आई हैव इंक्रीज द पीरियड. मैंने इन द सेंस मॉडिफिकेशन में दैट द पीरियड द टाइम अलाउड फॉर अचीविंग द बोनस इज एक्सटेंडेड बाय 6 months. और उसके कारण क्या हो रहे हैं? It results that S Limited concludes that highly probable that bonus will be achieved. Means now it will form part of my transaction price. So 2,50,000 मेरा add हो जाएगा. Total हो जाएगा 24 lakhs. Friends, 24 lakhs will be my transaction price. Now 2-3 में कितना revenue मैं book करना चाहिए? How much revenue should I book? So obviously it should be based on the percentage of completion. और percentage of completion 65% तो लास्ट टाइम दिया था, इस टाइम दिया नहीं. हम लोग ढूंढ सकते हैं. और कैसा ढूंढेगा? बेस्ड ऑन कॉस्ट. कॉस्ट इनकर टिल डेट. इफ यू लुक प्रॉपरली कॉस्ट इनकर टिल डेट मेरे पास तो एक ही है एंड दैट इज 65% वर्क हुआ था. उसके हिसाब से हमने फाइंड किया था 7,15,000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है. तो 11 लाख और मॉडिफिकेशन के कारण डोंट थिंक माय फ्रेंड्स बढ़ गया. वो कितना बढ़ा? 80,000. So 7,15,000 divided by 11,80,000 gives me 60.59 something. I can say approximately 60.60% approx. So what should be my revenue? It will be 24 lakhs का 60.60% माइनस जो मैंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है दैट इज 13 lakhs. So 24 lakhs 60.60% minus 13 lakhs. Friend, it comes to 154,400. और वही मेरा कॉस्ट कितना होगा? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग विद अ क्यूमुलेटिव कैचअप. मतलब ये पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट 154,400 will be the cumulative catch-up amount because 13 lakh is already recognized. Cost is nothing but 11,80,000. $7,15,000.
विच इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। हाँ, 7,15,080 आएगा, बट वो 80 इसलिए आएगा बिकॉज मैंने राउंड ऑफ किया था, 60.59 समथिंग था, उसको राउंड ऑफ किया था। सो द एडिशनल रेवेन्यू दैट आई विल बी रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम 1st April to 31st March विल बी 1,54,400। कॉस्ट तो जैसा है वैसा का वैसा है, कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं दिया था हमको कितना एडिशनल कॉस्ट हुआ था, तो हम एडिशनल कॉस्ट रिकॉग्नाइज करने का बात नहीं करता है। दिस इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव कॉस्ट। Cumulative cost. This is nothing but additional revenue. Yeah, let's move on to the solution for it. S Limited accounts for promised bundled goods services in a single performance obligation. Transaction price 20 लाख, expected cost 11, तो ये 9 लाख है expected profit. S Limited excludes 215 bonus from the transaction price because it cannot conclude that it is highly probable that significant reversal in amount of cumulative revenue recognized will not occur. It is highly probable that the reversal will occur. So मैं इसको लेता ही नहीं है. At the end of the first year, entity has satisfied 65% of performance obligation on the basis of cost incurred to date. So cost incurred to date are therefore 715, and S Limited reassesses the variable consideration and concludes that the amount is still constrained. Therefore, on 31st March, the following would be recognized. 13 lakhs आया, 20 लाख का और 11 लाख का 65%. अब 2-3 में क्या हुआ देखो. On 4th June 2002, the contract is modified. As a result, the fixed consideration and expected cost increased by 150 and 80 respectively. ठीक है. The total potential consideration after modification is 24, which is 2150 fixed plus 250 completion bonus. 24. 20 हमारा था ही, प्लस मॉडिफिकेशन का 1.5 लाख एक्स्ट्रा आया, प्लस 250 इज नथिंग बट बोनस वाला आया. ठीक है, और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया. इसके कारण मैं कंक्लूड करता हूं दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द ट्रांजैक्शन प्राइस विल नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट रिवर्सल in the amount of cumulative revenue recognized. Therefore, bonus of 250 is included in transaction price. S Limited अभी भी बोलता है कि ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. Thus, S Limited accounts for contract modification as if it were part of original contract. Therefore, S Limited updates its estimate of cost and revenues as follows. S Limited is satisfied 60.60. 7,15,000 का actual cost divided by 1180. Nothing but total expected cost. The entity recognizes additional revenue 154,400. Yeah, 154,400. This is what we have already recognized as a cumulative catch-up adjustment. ठीक है. So this is what was all about Ind AS 115. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. होप यू रिमेंबर. एक कैटेगरी में अपन इसको बात करते रखते हैं. हाँ, so I hope you got this. Is very important chapter. Let's move on to question number 5. XYZ, that is pertaining to Ind AS 37, provisions, contingent liabilities and contingent asset. XYZ offers 6-month warranty on its small to medium size equipment which can be put to use by customer with no installation support. The warranty comes with the equipment and customer cannot purchase it separately. The equipment is typically sold at a gross margin of 40%. XYZ has made a provision of 30,000 during the year ended on 31st March 2002, which is approximately 1% of its gross margin on sale of this equipment. Based on the past experience, it is expected that 1% of the equipment sold have been returned as faulty within the warranty period. Faulty equipments returned to XYZ during the warranty period are scrapped and the sale value is fully refunded to the customer. Assuming the sales occurred evenly during the year, how should XYZ Limited evaluate whether any additional warranty provision is required on equipment sold in the past as on 31st March 2002? Had the warranty period been 2 years instead of 6 months, what additional criteria would XYZ Limited need to consider? देखो बाबा, हम लोग वारंटी दे रहा है एंड वारंटी कैन नॉट बी परचेज सेपरेटली. मतलब ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है.
बिकॉज अगर वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता, मैं वारंटी भी देता था अलग से, तो फ्रेंड्स डू यू रिमेंबर हम इंड एस 15 में लेके जाते थे फिर इसको 115. नाउ वारंटी क्लेम्स आर हाउ मच? 1%. 1% ऑफ ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल ऑफ दिस इक्विपमेंट. और 5 एक्सपीरियंस में एक्सपेक्ट करता है 1% ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड हैव बीन रिटर्न्ड एज फॉल्टी ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड. और हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रैप आउट कर देता है. Faulty equipments returned during the warranty period are scrapped and the sale value is fully refunded to the customer. और मैंने प्रोविजन भी कितना किया है? 1% ही किया है. और तुम 6 months वारंटी दे रहा है. The working is already there. I will just go through the solution directly. कितना एडिशनल वारंटी बनाने का है? वारंटी क्लेम आर 1% ऑफ ग्रॉस मार्जिन, whereas customers are refunded the full selling price. बरोबर है. As the goods are scrapped, it is assumed that XYZ has no potential for reimbursement from its supplier regarding the faulty goods. The calculation will be as follows. 1% of gross margin is 30,000. So 100% will be 30 lakhs. Since gross margin is 40%, the sales will be 75 lakhs. But obvious है ना, वर्किंग कुछ नहीं है. ये मेरा सेल्स वैल्यू, उसमें से कॉस्ट, तो मेरे को आता है मेरा मार्जिन. और मैं वारंटी कितना करता है? वारंटी इज 1% ऑफ मार्जिन विच इज 30,000 ना. तो मार्जिन कितना हो गया? 30 lakhs आ गया ना. अब आगे क्या लिखा था? मार्जिन 40% है, तो ये 100% है. तो तुम्हारा टोटल सेल्स वैल्यू कितना? 30 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, नथिंग बट 75 lakhs. बरोबर. ऐसे वर्किंग करके दिया इन लोग ने. So sales is 75 lakhs. As provided in the question, sales are evenly spread during the year. And given the 6 months warranty, half of the sales occurred in the second half of the period is still covered within the warranty period as follows. But obvious, हाँ evenly है. इसका मतलब 75 lakh divided by 12, 6,25,000. तो जो पहले 6 महीने का सेल्स है उसका तो वारंटी पीरियड एक्सपायर ही हो जाएगा पहले महीने का एट द एंड ऑफ द ईयर. सेकंड महीने का भी एक्सपायर, थर्ड महीने का भी एक्सपायर, फोर्थ महीना, ऐसा 6 महीने तक का एक्सपायर हो गया रहेगा. 7th महीने का जो सेल है उसका 1 महीना बाकी, 8th महीने का सेल है उसका 2 महीना बाकी, 9th महीने का सेल एंड सो ऑन. तो वर्किंग है देखो. सो सेकेंड हाफ में तुम्हारा जो सेल्स हुआ रहेगा दैट इज नथिंग बट इनटू 6, 3750 6 महीने का. 3750 का अपने पास बाकी है. अब मुझे 3750 का कितना रिटर्न हो सकता है? तो बोलता है 1% है. बेस्ड ऑन 5 एक्सपेंस इट इज एक्सपेक्टेड 1% ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड हैव टू बी रिटर्न्ड. तो 3750 का 1% 37,500 हो सकता है. मैंने कितना वारंटी ऑब्लिगेशन किया है? 30,000. करना कितना चाहिए? 37,500, 7,500 का एडिशनल वारंटी. हाँ, आई होप एवरीबडी गॉट दिस 3750 बेटा. हाउ डिड वी अराइव एट 3750 माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ, 6 महीने का सेल्स, बिकॉज 75 lakhs पूरे साल का सेल्स है. अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था, had the warranty period been 2 years instead of 6 months, what additional criteria would XYZ need to consider? अच्छा, 6 महीना की जगह 2 साल होता. अरे बाबा, डोंट यू थिंक देन तो ये साल का सब सेल्स है उसकी भी वारंटी आता था, जो पिछले साल का सेल्स है जिसका वारंटी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, 2 साल खत्म नहीं हुआ है, उनके ऊपर भी प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता. या since the outstanding period of warranty is 6 months, that is less than a year, no discounting is required. However, if longer period is given, the entity would have taken into account the effect of time value of money. The amount of provision shall be present value of expenditure expected to required
to settle the warranty obligation. The discount rate shall be a pre-tax rate that reflects the market assessment. Okay. The discount rate shall not be reflected risk for which future cash flows estimate have been adjusted. तो मैं तो पहला बोलता था सर 75 lakhs का तो करना ही है, प्लस पिछले साल का जो रहेगा वो भी देखना पड़ेगा. हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज वेरी क्लियर दैट इस साल में जो सेल किया है उसको हम 2 years का वारंटी दे रहा है. नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर प्रीवियस ईयर, तो मैं उसको इग्नोर ही कर देगा कि उसका भी क्या रहेगा. अगर वो इन्फॉर्मेशन दिया रहता तो उसके ऊपर भी वारंटी आता था. हमने जो इस साल में सेल किया है उसके ऊपर कहने से पूरा 75 lakhs का सेल्स इज एक्सपोज टू द रिस्क. तो 75 lakhs का 1%, 75,000, और मैंने कितना वारंटी किया हुआ है 30,000. सो कहने से 45,000 का एडिशनल वारंटी आता. एंड व्हाट आर द एडिशनल पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस हियर. तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट आर द एडिशनल पॉइंट्स. डिस्काउंटिंग. This warranty will not be at 75,000. Actually, it will be present value of it because time value is going to play a role. So, but obvious in absence of any information with respect to the discounting rate and all those things, we have just done the totality. Yeah, you can just go through it now, dear students. Clear? Chalo, let's move on to the next question. Ind AS 32, financial instruments. On 1st April 2001, 2x01, chalo, entity X issued 10% convertible debentures with a face value of rupees 1000 maturing on 2x11, मतलब 10 साल के बाद. इधर 01 है, इधर 11. The debenture is convertible into ordinary shares of the entity at an conversion price of rupees 50 per share. Interest is payable yearly in cash. On 1st April 2002, to induce the holder to convert the convertible debentures promptly, X Limited reduces the conversion price to rupees 40 if the debentures are converted before 1st June 2002, that is within 6 days. The market price of X Limited ordinary shares on the date of the terms are amended to rupees 80 per share. How will the revised terms be accounted for? चलो फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स यहां पे अगर हम देखते हैं सो यूल फाइंड दैट पहला तो द इंटरेस्ट पोर्शन विच यू आर गोइंग टू पे वो तो मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट में रहेगा और बाकी का सब मेरा इक्विटी कंपोनेंट है. अब वो इक्विटी कंपोनेंट जो भी रहेगा उसका कितना शेयर्स देने वाले थे पहले अमेंडमेंट होने से पहले, मॉडिफिकेशन होने के पहला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स to be issued, fixed to fix है ना. अंडर द ओरिजिनल टर्म्स कितना इक्विटी शेयर्स देने वाले थे, तो हम लोग उनको देने वाले थे कन्वर्जन प्राइस 50 पर शेयर. ठीक है. सो 1000 रुपीज का डिबेंचर्स 50 पर शेयर कहने से 20 शेयर्स देने वाले थे. नाउ हाउ मेनी शेयर्स आर यू गोइंग टू गिव? क्या किया? 1000 डिवाइडेड बाय 40. It comes to how much? 25 शेयर्स. तो तुम पहला देने वाला था 20, अभी 25 देने वाला है. इसका मतलब एडिशनल शेयर्स कितना देने वाले हो? 25 माइनस 20, 5 शेयर्स. और वो 5 शेयर्स का आज का वैल्यू क्या है जो तुम एक्स्ट्रा देने वाले हो? आज का मार्केट प्राइस, मॉडिफिकेशन के दिन का मार्केट प्राइस कहने से 80.
₹400. What should you do? Recognize in profit and loss और क्या? It will be recognized in P&L. खत्म. Yeah, you may just have a glance over the answer, very small answer. The fair value of incremental consideration paid by entity X is calculated as follows. Under amended terms ₹40. So 25 shares बरोबर है, ठीक है, 400. Done. Let us now move on to the next which is borrowing cost wala. X Limited commenced the construction of a plant qualifying asset on 1st of September 2001. Estimated to cost 10 crores. For this purpose, X has not raised any specific borrowings. Rather, it intends to use general borrowings which have a weighted average cost of 11%. Total borrowing cost incurred during the period, namely 1st September to 31st March, are 0.5 crores. The other relevant details are as follows. Cost of construction accrued 1.50, cash outflow paid in advance at the start of each month, that is 3 October में 0.5, 1.7, November में 1.5, 2.5, December में 0.5, January में 1.8 and 1 February 0.7, nothing, 3 and 1.5. Based on the above information, discuss the treatment of borrowing cost as per cash outflow basis and accrual basis, and also suggest an appropriate amount of interest that should be capitalized to the cost of the plant in the financial statements for the year ended on 31st March 2002. चलो भाई, accrual basis और cash basis कैसा जाएगा रे? accrual basis पे और cash basis पे अगर मैं accrual देखेगा तो ये वाले अमाउंट के हिसाब से जाएगा 1.5, ये अमाउंट के हिसाब से जाएगा. अगर कैश के हिसाब से जाएगा तो ये अमाउंट के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट आएगा. Yeah, like this 3 is there. So on this 3 crore, I will be charging interest at the rate of what percent? 11%. For how many months? September, October, November, December, January, February, March, 7 महीना. वैसे ही अक्टूबर के लिए 6 महीना, इसके लिए 5 महीना एंड सो ऑन. अगर मैं अक्रूवल बेसिस पे जाता था तो कैसे होता था? तो ये अमाउंट्स को लेके जाते थे हम लोग. Now, for examination purpose, you can do individual basis, जैसे कि ये 3 करोड़ इंटू अपना रेट जो दिया है 11% इंटू 7/12, या तो फिर तुम एवरेज एक्सपेंडिचर भी फाइंड कर सकते हो कि भाई 3 करोड़ का एवरेज एक्सपेंडिचर करो, 3 करोड़ इंटू 7/12, 1.7 इंटू 6/12, एवरेज एक्सपेंडिचर फाइंड करके जो भी अमाउंट आता है उसका सीधा का सीधा इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर देने का. नाउ क्या लगता है तुमको, अक्रूवल बेसिस पे कि कैश आउटफ्लो बेसिस पे, किस बेसिस पे करना चाहिए? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर हमने बात किया था कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच हैज रिजल्टेड इन कैश पेमेंट्स, transfer of other assets or assumption of interest bearing liabilities. और ये एक्सपेंडिचर में से हम कोई भी एडवांस रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है, तो हम उसमें से डिडक्ट कर देते थे. पेमेंट्स हुआ है, पेमेंट्स ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ अदर असेट्स एंड assumption of interest bearing liabilities. Then my dear students, we say that is our capital expenditure. तो मेरा बेस्ट बेसिस क्या रहता है? पेमेंट्स मेड, कैश आउटफ्लो. व्हाट आर द कैश आउटफ्लोस? या ऑफ कोर्स ये कॉस्ट अक्रू हुआ है. अगर इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटीज है तो कैश आउटफ्लो पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटीज को भी मैं ले लेता है, मतलब कंसिडर तो हो ही जाएगा. मैं वर्किंग पे आ जाता हूं सीधा, नॉट अ बिग क्वेश्चन देयर. हाँ, सीधा का सीधा सॉल्यूशन पे आ जाता हूं इसके ऊपर. ऑफ कोर्स बहुत थियरी लिख के दिया है आरटीपी में. देयर इज ओनली फॉर रीडिंग, फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस हमारा वर्किंग ही इंपॉर्टेंट रहेगा. Para 14 states that to the extent that the entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining qualifying asset,
The entity shall determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization by applying a capitalization rate. अरे जनरल बोरोइंग हुआ तो कैपिटलाइजेशन रेट यूज करेंगे. The capitalization rate shall be the weighted average of borrowing cost applicable to all the borrowings of the entity that are outstanding during period. However, an entity shall exclude from this calculation borrowing cost applicable to borrowing made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset until substantially all activities necessary to prepare that asset for intended use or sale are complete. मतलब specific borrowing cost इस general के part नहीं बनेगा. The amount of borrowing cost that an entity capitalized during the year, that is period, shall not exceed the amount of borrowing cost it incurs during the period. बरोबर है. See, this is just our theoretical part. अब देखो यहाँ पे September, October, November. So what we have done in the sense our RTP, ICI has done is nothing but they have taken average capital expenditure. You can alternatively find out not average capital expenditure, you can find out interest for each and every expenditure. Final answer सेम ही आता है. तुम लोग 1.50 इंटू 11% इंटू 7/12 करो, फिर ये करो, ऐसा करके जो भी टोटल तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस ओनली. हाँ, ये लोग एवरेज एक्सपेंडिचर करेगा और फिर सीधा 2.74 को क्या किया 11% से मल्टीप्लाई. फिर इधर क्या किया 4.02 सीधा 11% मल्टीप्लाई. Means you do individual find out borrowing cost or you find out average capital expenditure and find out borrowing cost. Both the ways will give you same answer. ठीक है. तो अभी अगर मैं कॉस्ट अक्रूड के हिसाब से देखता है तो 0.3 करोड़ आ रहा है. अगर मैं एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो लेता है तो 0.44 करोड़ आ रहा है. अब कौन सा अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइज होगा? तो expenditure on qualifying asset include only those expenditure that have resulted in payments of cash, transfer of other assets or assumption of interest bearing liabilities. Interest bearing liabilities का assumption. Expenditure are reduced by any progress payment received, grant received in connection with the asset. The average carrying amount of the asset during the period including borrowing cost previously capitalized is normally a reasonable approximation of an expenditure to which capitalization rate is applied in this period. Where cash has been paid but the corresponding cost has not yet accrued, interest becomes payable on payment of cash. Therefore, the amount so paid should be considered for determining the amount of interest eligible for capitalization subject to fulfillment of other conditions. Accordingly, in the present case, interest should be computed on the basis of cash flows rather than on the basis of cost accrued. Therefore, the amount of interest eligible for capitalization will be 0.44 crore. मतलब मेरा cash basis वाला. Another important factor to be noted is paragraph 14 requires that the amount of borrowing cost that the entity capitalized during the period shall not exceed the amount of borrowing cost which is incurred during the period. Thus, the amount of borrowing cost to be capitalized should not exceed the total borrowing cost incurred during the period, that is 0.5 crore. ये किधर से आया रे कुटुन? तो 0.5 करोड़ देखो इधर दिया हुआ था September 1st से लेके इधर तक 0.5 करोड़. तो कोई इश्यू नहीं. हम लोग कितना बोल रहा है 0.44 करोड़ को कैपिटलाइज करो, 0.5 ही हुआ है. मेन क्राइटेरिया ये था कि कौन से अमाउंट पे कैपिटलाइजेशन होता है. तो कैपिटलाइजेशन होता है ऑन कैश आउटफ्लो, पेमेंट्स विच आर मेड प्लस ट्रांसफर्स ऑफ असेट्स जो भी उस कंस्ट्रक्शन काम में हुआ है, प्लस assumption of interest bearing liabilities उसका होता है, not the cost of construction which has been accrued. Yeah. Now friends, we come upon leases, that is Ind AS 116. Case 1, case wise है, एक एक सिनेरियो देख लेते हैं. The last mile is a dedicated cable that connects entities wise network with the end customer's device. The use of this cable is at the discretion of the customer. Entity Y decides the location of endpoints and has a right to replace the line's dedicated cable. However, it is not practical to replace the line since replacement would require additional cost to be incurred without any corresponding benefit. Whether the arrangement would be within the scope of 116. उसमें scenario 2, if it is practical for entity Y to replace the lines and entity Y would benefit from this replacement, would your answer be different? Whether there is an identified asset or not. आइडेंटिफाइड असेट है कि नहीं है वो हम लोग आइडेंटिफाई करता है. केस 2, कस्टमर एक्स एंटर्स इनटू 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद यूटिलिटी कंपनी
entity Y for right to use the three specified physically distinct fibers with different larger cable connecting Mumbai to Delhi. Customer makes the decision about the use of fibers by connecting each end of the fibers to its electronic equipment. Entity Y owns extra fibers but can substitute those for customer fibers only for reasons of repairs, maintenance or malfunction. The useful life of the fiber is 15 years. Whether this arrangement is covered under 116 means whether the contract is a lease. And case 3, customer X enters into a 10-year contract with entity Y for a right to use a specified amount of capacity within a cable connecting Mumbai to Delhi. The specified amount is equivalent to customer X having the use of full capacity of the 3 fiber strands within the cable. The cable contains multiple fibers with similar capacities. Both technical and entity Y makes decision about transmission of data. That is, entity Y lights the fiber, makes the decision about which fibers are used to transmit customers' traffic. The useful life of the fiber is 15 years. Whether this arrangement is covered under Ind AS 116. My dear students, do you remember? वो एक अपन ने एक फ्लो चार्ट बनाया था 116 वाला. Whether that arrangement contains a lease or not. There has to be an identified asset. So that identified asset, I'll just write down the point. Is there an identified asset? That was the first thing. We say yes if the lessor does not have substantial substitution rights. When can I say the lessor has a substantive substitution rights? तो हम बोलते हैं सर अगर the lessor has a practical ability to substitute or and not or and he will get economic benefits from substitution, then he has substantive substitution rights. So is there an identified asset? अगर आंसर नो आता है तो हम बोलते हैं लीज है ही नहीं. उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन पूछता था, does the customer have the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use? If the answer is no, then it is not a lease. If answer is yes, then we say capacity. अगर समझो customer has right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset. अगर सर वो यूज ऑफ द एसेट कैपेसिटी बेस्ड है तो वहां पे मैंने तुमको बोला था 90% से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे सर यस इट इज. Who has the right to direct, or I can say customer has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period. The customer has a right to direct. But अगर वो predetermined है तो हम बोलते हैं customer operates the asset and has designed the asset. Then we say it is a lease. I hope you remember these points. चलो अभी इसको ही बेस पे तीनों केस का आंसर अपन लोग सॉल्व करते हैं. The last mile is a dedicated cable. बराबर है, dedicated cable connects entities Y's network with the end customer device. The use of the cable is at the discretion of the customer. Entity Y decides the location of endpoints and has right to replace the line, dedicated cable. However, it is not practical to replace the line since replacement would require additional cost to be incurred without any corresponding benefit. Whether then arrangement would within the scope of Ind AS 116. क्या ये arrangement Ind AS 116 में रहेगा? Yes, it is. Why? Because the
seller does not have substitution rights. Scenario 1, yes, this is lease. This will be a lease. Scenario 2, if it is practical for the entity to replace the lines and the entity Y would benefit from this replacement, would your answer be different? Yes. Then I will say the seller or the lessor has substitution rights. If the lessor has substitution rights, my dear students, तो हम लोग क्या बोलेंगे? There is no identified asset. ये हो गया सिनेरियो 1, सिनेरियो 2. हाँ चलो आंसर भी साथ साथ में देख ही लेते हैं. पैराग्राफ 9 B9 ये सब बोलता है a contract is or contains a lease if the contract conveys the right of control the use of an identified asset for a period of time in exchange of consideration. Customer has right to obtain substantially all the economic benefits, the right to direct the use of asset. या फिर दूसरा identified asset specifically specified in the contract. However, an asset can also be identified being implicit specified at the time the asset is made available for use to the customer. ठीक है, substitution rights वाला ये nothing but this all the theory to identify whether a lease is there or not, whether the contract contains a lease or not. ठीक है, चलो scenario 1. Last mile, which is a dedicated cable, is an identified asset since it is physically distinct. There is no substantive substitution rights with entity Y as it does not have practical ability to substitute the alternative asset throughout the period of use. Thus, the arrangement is within the scope of 116. फिर दूसरा scenario, if entity has a if entity Y has a practical ability to replace the lines and it would benefit from such replacement, entity Y has substantive substitution rights. In such case, this arrangement for the last mile cable will not be within the scope of Ind AS 116, means it is not a lease. चलो दूसरा केस देख लेते हैं. Customer X enters into a 10-year contract with a utility company entity Y for right to use 3 specified physically distinct fibers within the larger cable connecting Mumbai to Delhi. Customer makes the decision about the use of fibers by connecting each end of the fibers to the electronic equipment. Entity Y owns extra fibers but can substitute those for customers' fibers only for the reasons of repairs and maintenance or malfunction. The useful life of the fiber is 15 years, whether the arrangement is covered under Ind AS 116. Yes, why not? It is a lease. Identified asset hai. You have right to control the use of asset. Hence, it is within the parameters of 116. यही बात किया था ना. Does the customer have right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use? Yes. Who has right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period? The customer, the lessee. Yeah, so it is a lease. अब हम आता है तीसरा केस. Customer X enters into 10-year contract with entity Y for right to use specified amount of capacity within the cable connecting Mumbai to Delhi. This specified amount is equivalent to customer X having the use of full capacity of 3 fiber strands within the cable. The cable contains multiple fibers with similar capacities. Entity Y makes decision about transmission of data. Entity Y lights the fibers, makes decision about the fibers are used to transmit customers' traffic. The useful life of the fiber is 15 years. Whether the arrangement is covered under Ind AS 116? No. Who has a right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period? It is nothing but supplier. And दूसरा, मैं full capacity भी नहीं वापर रहा है. Yeah, Y has a right to use specified amount of capacity within the cable. Yeah, so it is not a lease. The arrangement does not contain a lease. क्या provide करता है? Capacity or other portion of an asset that is not physically distinct is not
an identified asset unless it represents substantially all. Substantially all मतलब हम 90% से ज्यादा का बात किया था. All of the capacity of the asset and thereby provides the customer with the right to obtain substantially all economic benefits from the use of the asset. In the given case, capacity portion that will be provided to customer X is not physically distinct from the remaining capacity of the cable and does not represent substantially all of the capacity of the cable. Thus, it is not an identified asset. Further, entity Y makes all decision about transmission of data and all those things. Thus, the contract does not contain a lease and therefore within not the scope of 116. Okay, whether it is a lease or not, इसके ऊपर मस्त क्वेश्चन है ये. Now, next question आता है business combination का. Entity A acquires entity B. Entity A agrees with the former shareholders of entity B to pay 900 with additional payment of rupees 500 if the subsequent earnings of entity B reach a specific target in 3 years. The former shareholders also become employees. On the acquisition date, the fair value of net assets of entity B amounts to rupees 850 and fair value of additional payment is estimated at 200. Contingent consideration. At the acquisition date, the outflow of additional payment is not probable. Over the next 3 years, cumulative earnings of entity B before considering the effect of additional payments amounts to rupees 1050. At the end of the year 3, entity A pays 500 as conditions were met. State the impact on the financial position and result of classifying the payments as remuneration and contingent consideration. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको कंटिंजेंट कंसिडरेशन मानता है तो क्या इफेक्ट देखेगा और अगर हम इसको रेम्युनरेशन मानेंगे तो इफेक्ट क्या होगा. नाउ फ्रेंड्स, आई होप यू रिमेंबर हम ऐसा एंट्री पास करते थे, आईना डेबिट to purchase consideration to NCI. Of course, here nothing has been mentioned. You have acquired the whole entity with former shareholders of entity B to pay rupees 900 with additional payment of 500 if subsequent earnings reach a specified target in 3 years. The former shareholders are also employees. The fair value of the net asset is 850. मतलब अपना आईना कितना है? 850 है, बरोबर है. And the fair value of additional payment is 200. 900 दे रहा है और उसका fair value 200 है, बरोबर है. So can I say total fair value is 1100 ऐसे देखने जाएगा. हाँ, assuming that this PC is nothing but my what? मैं ये PC को assume करता है कि PC के अंदर contingent consideration में included है. तो ये जो difference आता है मेरे को 850 और इसके बीच का जो difference है that is nothing but what? Goodwill. $250 का. बट अगर मैं ये पेमेंट को रेम्युनरेशन क्लासिफाई करता हूं देन दिस 1100 का पीसी नहीं रहेगा. तो फिर मेरा पीसी कितना रहेगा? देन माय पीसी विल बी नॉट 1100, इट विल बी 900 इफ आई से कि ये रेम्युनरेशन है, दिस इज नॉट कंटिंजेंट कंसिडरेशन. तो ऑब्वियसली गुडविल चेंज हो जाएगा. देन माय गुडविल विल बी ओनली 50 रुपीज. सो इट ऑल डिपेंड्स. फिर बाद में क्या होगा? अगर आई एम कंसिडरिंग इट एज कंटिंजेंट कंसिडरेशन देन कैन आई से उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे और वो फेयर वैल्यू चेंजेस किधर जाता जाएगा? हाँ, बिकॉज ये पीसी के अंदर ही पार्ट रहेगा ना, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन. इफ इट इज हियर देन इट इज 200 और बाकी अदर मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी है और 200 को फेयर वैल्यू पे लेके जाएगा. अभी 3 साल के बाद उसको जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट 500 का होगा. मेरा फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज शोन इन द बुक्स एट 200. आई विल मेक अ पेमेंट ऑफ 500. तो 300 है वो मेरे पीएनएल को हिट करेगा. बट इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ रेम्युनरेशन, मैं बोलता है ये रेम्युनरेशन है, देन फ्रेंड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
तो फिर मेरा कंसिडरेशन कुछ दिखता ही नहीं रहेगा। जब भी पे करेगा, एज एंड व्हेन आई पे, डोंट यू थिंक आई विल बी पेइंग ऑफ 500, द होल अमाउंट विल हिट माय पीएनएल। मेरा पूरा का पूरा पीएनएल में वो 500 का हिट लगेगा और वो मेरे अर्निंग्स को इफेक्ट करने वाला है, बस और कुछ नहीं है। 103 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। The impact of financial position resulting on classifying the payment as remuneration and contingent consideration. Consideration is 900. Fair value of additional payment. If it is contingent consideration, तो वो 200 ऐड होएगा तो total is 1100. My goodwill is 250. क्या जो हमने इधर किया था, और अगर वो remuneration नहीं है, वो remuneration है, तो मेरा consideration is 900. तो फिर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट इज 50, तो गुडविल इज 50. ठीक है, वही किया हमने, ये 50 या तो 250, दोनों में से कोई भी हो सकता था। उसके बाद फ्रेंड्स, सब्सिक्वेंट चेंजेस इन एडिशनल पेमेंट, कुछ नहीं। मेरा अर्निंग्स कितना हुआ 1050। सब्सिक्वेंट चेंजेस क्यों जीरो लिखा है मैंने? सी रेम्युनरेशन है तो जीरो ही आएगा, लेकिन अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन था तो फेयर वैल्यू पे जाता था, कुछ बोला नहीं था इन्फॉर्मेशन। तो मैं ऐसा ही मान के जाता हूं कि फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन ऑन सब्सिक्वेंट पीरियड इज आल्सो विद इन 1 ईयर, याद है, मेजरमेंट पीरियड इज आल्सो 200, सो नो चेंजेस आर देयर। फिर माय अर्निंग्स आर 1050 एंड आई पे द कंसिडरेशन, आई एम पेइंग द कंसिडरेशन, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? कैन आई से 300 इधर जाएगा अगर कंटीजेंट माना है, और इधर 500 जाएगा पीएनएल में अगर उसको रेम्युनरेशन माना है। तो रिपोर्टेड रिजल्ट्स विल बी दिस वे। या सो वेरी सिंपल पॉइंट वाज देयर हियर, nothing big in this area. Let's move on to the next question, that is 105. X Limited acquire B Limited exclusively for the purpose of sale. हाँ, हमने खरीदा ही है सेल करने के लिए, कहना इसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के उसमें ही बैठ गया ये, and it meets the criteria to be classified as discontinued operation under Ind AS 105. Further following information is available: fair value of total assets excluding liabilities on acquisition 360, cost to sell on acquisition and on reporting date 10, fair value of liabilities on reporting date 80, fair value of total assets excluding liabilities on the reporting date 340. How discontinued operation pertaining to B Limited should be measured in CFS of X Limited on the acquisition date and reporting date. दोनों दिन पे हम इसका कैसा measurement करेगा? Now, can I say this is nothing but a disposal group? 105, non-current asset held for sale and discontinued operation. तो disposal group क्या है? Nothing but some group of assets which are going to be disposed of along with their related liabilities. उस disposal group में there may be certain assets which will be covered by the principles of other standards, but for the purpose of 105 हम उस disposal group में ही उसको ले लेते हैं, and जो related liabilities रहता है वो भी आ जाता है। Now B Limited is acquired, यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे रहा है B Limited is acquired, किसके लिए? Sorry, B Limited is not, X Limited acquires B Limited. Yeah, that is B Limited is acquired with a view to sell. It means it is classified as discontinued operations, which is nothing but a disposal group. अगर disposal group है तो मैं उसका किस पे valuation करेगा? बस यही बात याद रखने का था। Can I say on the acquisition date I will value it at 360 minus 10. Fair value of total assets excluding liabilities 360 minus 10, तो 350 पे assets value होगा और liabilities तो मेरा 80 पे ही है, fair value of the liabilities, बरोबर है। उसके बाद ये हो गया acquisition date पे, so 350 पे आएगा fair value less cost to sell, और fair value of total assets excluding liabilities on the reporting date, reporting date पे कितना है 340 less cost to sell 10, तो 340 माइनस 10 कितना हो गया 330, तो जो 340 था वो 330 हो गया, जो भी चेंजेस रहेगा उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेगा। आई डोंट थिंक सो दिस वाज दैट मच चैलेंजिंग फॉर यू आल्सो, वेरी सिंपल, रिकॉग्नाइज इट एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
Disposal group as a group of assets to be disposed of by sale or otherwise together as a group in a single transaction, and liability directly associated to those assets that will be transferred in the transaction. The group includes goodwill acquired in a business combination. If the group is a CGU to which the goodwill has been allocated in accordance with requirement of para 80 to 87 of Ind AS 36, impairment of asset, or if it is in the operation within such CGU. In the given case, B Limited is acquired with a view to sell and it meets the criteria to be classified as discontinued operation. ठीक है, ये सब थियरी है जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुका है. अभी मेरा मेन पर्पस क्या है कि जो हमको कॉन्सेप्ट आता है उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा. या initial recognition lower of its carrying amount had it not been classified for cash and fair value less cost to sell. Hence, if the asset or disposal group is acquired as part of business combination, it shall be measured at fair value less cost to sell. वो तो बहुत obvious है because मेरे books में carrying cost ही नहीं है उसका. Therefore, on acquisition date, X Limited will measure B Limited at disposal group at fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell is 360 minus 10, 350. Fair value of liability is 80. On the reporting date, हम लोग remeasure करेगा. हाँ, मेरा कैरिंग अमाउंट 350 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है 330. Yes, on the reporting date, X shall present these assets and liabilities separately from other assets and liabilities in CFS. In the statement of P&L, हमारा प्रॉफिट और लॉस चला जाएगा. कहां से आया प्रॉफिट एंड लॉस? नथिंग बट सर, ये मेरा था 350, ये हो गया 330, सो 20 का मेरे को प्रॉफिट और लॉस है. अब डर मत जाना सर, इधर तो 270 250 लिखा है. अरे यार, ये जो 350 दिया है ना, उसमें से तेरे को 80 का लायबिलिटी माइनस करने का नेट वैल्यू किया है. और कुछ नहीं, दे हैव जस्ट डन नेट वैल्यू. तो 80 का लायबिलिटी माइनस कर देगा तो डोंट यू थिंक इट विल बी 270, और 330 में से भी 80 कर देगा तो माय डियर स्टूडेंट इट विल बी 250. क्लियर टिल हियर? ओके, चलो नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी वाला. आ जाओ, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं. एंटिटी एक्स owns 30% of share capital of entity B and has ability to exercise significant influence over it. Entity B holds the following investments: 70% of share capital of its subsidiary entity C and 30% share capital of entity D with an ability to exercise significant influence. Entity A transacts with entity C and D. Should entity A disclose this transaction as a related party transaction in the separate financial statement? Also explain the disclosure of such transaction in financial statements of C and D as related party transaction. देखो, एंटिटी ए है अपने पास, याद है ना, 2 पॉइंट था. फर्स्ट पर्सन्स के लिए था, बाद में एंटिटी के लिए था. पर्सन्स के लिए 3 पॉइंट लिखा गया था और फिर एंटिटी के लिए 8 पॉइंट्स लिखा था. अब एंटिटी ए, व्हाट इज एंटिटी ए हैविंग? एंटिटी ए इज हैविंग 30% शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी बी. मतलब कहने से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. और फिर वो एंटिटी बी है holds 70% of entity C. And 30% of entity D. The transactions have been done between A and C, A and D. Entity A transactions with C and D. Should entity A disclose this transaction as related party transaction in its separate financial statements? क्या A को ही disclose करना है? Also explain the disclosure requirement of such transaction in financial statements of C and D as a related party transaction. So now the answer to this, entity A के हिसाब से कौन रिलेटेड पार्टी है? तो एंटिटी बी तो है ही, as well as entity C is also there. Don't you think because I am able to influence here and B is having control over C,
so I am able to influence D. हाँ, but entity D नहीं है. For entity C, of course, it will be A, B and D, all of them are there. Entity C के लिए. For entity D, it will be C, B, but not entity A. D और A related party नहीं है. चलो, the answer, entity A should disclose its transaction with entity C in entities A separate financial statements. Entity C is a related party of entity A because entity C is the subsidiary of entity A's associate entity B. Entity A's management is not required to disclose entity A's transaction with entity D in the financial statements. Entity D is not a related party of entity A because entity A has no ability to exercise significant influence over entity D. Entity C is required to disclose the transactions with entity A in its financial statements because entity A is its related party. D नहीं चाहिए बिकॉज वो रिलेटेड पार्टी नहीं है. एंटिटी डी क्या बोलेगा मेरे लिए? सिर्फ एंटिटी सी है और एंटिटी बी है, और बेचारा एंटिटी सी बोलेगा ए बी डी तीनों हमारा रिलेटेड पार्टी है. बी भी बोलेगा ए सी और डी तीनों हमारा रिलेटेड पार्टी है, बट ए और डी में कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता. ओके फ्रेंड्स, यू मे जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर इट नाउ. क्वेश्चन नंबर 11 इज ओवर. Let's move to another question. 5 क्वेश्चन है based on Ind AS 111 or 28. So we have Ind AS 111, that is nothing but our joint operation या तो joint venture identify करने का है हमको कि principles of 28 will apply और principles of 111 will apply. Identify the type of joint arrangement in each of the following cases. X and Y manufacturing similar type of mobile phones form a joint arrangement to manufacture and sell mobile phones. Under the terms of the arrangement, both X and Y are to use their own assets to manufacture the mobile phones and both are responsible for liabilities related to their respective manufacture. The arrangement also lays down that the distribution revenues from the sale of mobile phone and expenses incurred thereof. X Limited, however, has exclusive control over marketing and distribution functions and does not require the consent of Y Limited in this respect. No separate entity is created for the arrangement. Paila. Continuing with number 1 above, what would be the classification of joint arrangement if X and Y both jointly control all the relevant activities of the joint arrangement, including marketing, distribution function? Third, what would be the classification of joint arrangement is the means for manufacturing mobile phones on a common platform? What would be the classification of joint arrangement if under the terms of the arrangement a separate entity is created to manufacture mobile phones? Continuing with point number 3 above, the joint arrangement is a mean of manufacturing mobile phones on a common platform, but the output of the joint arrangement is purchased by both X and Y in the ratio of 50:50. The joint arrangement cannot sell output to the third parties. The price of the output to X and Y is set by both the parties to the arrangement to cover the production cost and other admin cost of the joint arrangement entity. Would your answer to number 4 above be different if X and Y sold their respective share of output to third parties? Assuming that in point number 4, the contractual terms of arrangement were modified so that joint arrangement entity is not obliged to sell the output to X and Y, but was able to sell the output to third parties. Okay, my dear students. बरोबर से देखेगा तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है whether this arrangement is a joint venture, then Ind AS 28 will apply, और joint arrangement तो Ind AS 111 अप्लाई होता है. तो आई होप यू रिमेंबर, थोड़ा सा एक ब्रश अप कर दूं ये पॉइंट. तो हम सबसे पहले पूछते क्या एक सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर बना है? अगर सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर नहीं बना है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, और ये सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर नहीं बना है तो वो जॉइंट अरेंजमेंट ही है. बट अगर सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर बना है तो हम पूछते हैं डज द सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर
give parties the rights to the assets and obligation for the liabilities. So my dear students, इसका आंसर दो हो सकता है, या तो यस या तो नो। अगर यस है तो ये जॉइंट अरेंजमेंट है 111 वाला, अगर नो है तो हम आपको आगे जाते हैं कि भले वो स्ट्रक्चर का द स्ट्रक्चर लीगल स्ट्रक्चर डज नॉट गिव देम राइट्स टू असेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द लायबिलिटी, तो हम बोलते हैं डू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? Do the terms of contractual arrangement specify that parties have rights to asset and obligation to liability? Of the arrangement? क्या आंसर आ सकता है? हाँ सर, यस। दो द लीगल स्ट्रक्चर हाँ नहीं बोलता है, लीगल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है wherein the legal structure allows them to have rights to assets, rights to obligation towards liability. Then I say सर वो नहीं है, तो मैं बोलता आगे जाओ, अगर वो है तो जॉइंट अरेंजमेंट है, अगर नहीं है तो आगे पूछो डज द terms of the contractual arrangement specified that parties have rights to assets and obligation towards liability of the arrangement? Answer is yes. सर हमने स्ट्रक्चर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे बीच में आपस में एक एग्रीमेंट है, देन ऑफ कोर्स इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट। मैं बोलता नो सर, देयर इज नथिंग लाइक दिस। See, in order to become a joint venture, you have to fulfill all the conditions. Have the parties designed the arrangement in such a way that it provides them with all economic benefits? मतलब पूरा का पूरा आउटपुट तुमको ही जाता है। Of the asset held, and the arrangement depends on, भले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन ये अरेंजमेंट का डिजाइनिंग ऐसा हुआ है कि जो भी आउटपुट होगा उसका जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा, दैट ऑल आउटपुट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिसीव्ड बाय अस ओनली। यस है तो वापस जॉइंट अरेंजमेंट, नो है तो माय डियर स्टूडेंट्स हम बोलता है ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और अगर जॉइंट वेंचर है तो 28 है, जॉइंट अरेंजमेंट है तो 111 है। दिस इज द स्टफ विच वी स्टडीड ऑल्सो वाइल डूइंग कंसोलिडेशन, कि जॉइंट अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, तो हम यही पूछते कि भाई जॉइंट अरेंजमेंट तभी है प्रोवाइडेड the parties are having rights to the assets and obligation towards liability, either through the legal form or through contractual terms, or the arrangement is designed in such a way that the whole output पूरा इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोग ही लेगा सब्सटेंशियली, या तो ही हम बोल सकते हैं कि सर ये जॉइंट अरेंजमेंट है। क्लियर माय फ्रेंड्स? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक एक वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल सी, हाँ किसमें क्या है। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन, X and Y manufacturing similar types of mobile form a joint arrangement to manufacture and sell mobile phones. Under the terms of the arrangement, both X and Y are to use their own assets to manufacture the mobile phones and both are responsible for liabilities
related to respective manufacturer. The arrangement also lays down distribution revenues from sale of mobiles and expense. X Limited, however, has exclusive control over marketing and distribution function and does not require the consent of Y in this respect. No separate entity is created. बोलो point number 1, क्या ये joint arrangement है? Is this joint arrangement a joint operation and principle of 111 will come, or is this joint arrangement joint venture and principles of Ind AS 28 will come? Yes my dear friends, क्या है ये? तुम बोले सर separate entity नहीं है. Yes my dear, your point is very correct, it is not a separate entity, but पहला ही point, ये joint arrangement ही नहीं है, because joint arrangement trigger होने के लिए don't you think you require a joint control? There has to be a contractually agreement of sharing of control. यहां पे तो देखो what has happened, exclusive control मेरे पास है, इसका मतलब ये does not fit in the definition of joint arrangement only. और अगर joint arrangement ही नहीं है तो फिर whether it is a joint operation or it is a joint venture वो बात ही नहीं करने का. There has to be a joint arrangement. Yeah, so point number 1, there is no joint arrangement only. Point number 2, continuing with one above, what would be the classification of joint arrangement if X and Y both jointly control all the relevant activities of the joint arrangement including marketing and distribution? Jointly control करता है. Yes friends, तो क्या हो जाएगा ये लिव? कहने से अगर पॉइंट नंबर 1 के साथ इसको मैं कर रहा हूं और मैं बोल रहा जॉइंटली कंट्रोल है तो सेपरेट एंटिटी ही क्रिएट नहीं हुआ, देन इट इज जॉइंट ऑपरेशंस. या सो पॉइंट नंबर 2 इज जॉइंट ऑपरेशन. क्यों? बिकॉज एंटिटी क्रिएट ही नहीं हुआ है. एंटिटी तो होना चाहिए ना. ये देखो हमने इधर किया था सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर. अगर लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इट इज ऑलवेज अ जॉइंट ऑपरेशंस. जे में लिख रहे हैं जॉइंट अरेंजमेंट इन द सेंस इट्स नथिंग बट अ जॉइंट ऑपरेशन. जॉइंट अरेंजमेंट इज अ जॉइंट ऑपरेशन. नहीं तो एंड प्रिंसिपल्स ऑफ 111 will apply. What would be the classification of joint arrangement? I am on third point. If under the terms of the arrangement a separate entity is created to मैन्युफैक्चर द मोबाइल फोन्स. अच्छा, सेपरेट एंटिटी क्रिएट हुआ तो अभी मैं बोलेगा देखो भाई सेपरेट एंटिटी क्रिएट हुआ है और वो इट गिव्स राइट्स टू असेट्स एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स लायबिलिटी, देन इट इज नथिंग बट जॉइंट ऑपरेशन. इफ इट डज नॉट गिव देन इट इज जॉइंट वेंचर. बिकॉज क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पे. पॉइंट नंबर 4 बोलता है कंटिन्यूइंग विथ थर्ड अबाउट, द जॉइंट अरेंजमेंट इज अ मीन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, but the output of the joint arrangement is purchased by both X and Y in the ratio 50:50. The joint arrangement cannot sell the output to third parties. The price of the output sold to X and Y is set by both the parties to the arrangement to cover the production cost and other admin cost of the joint arrangement entity. बोलो. अरे my dear students, याद आया थर्ड पॉइंट अपना इधर था. हाँ, the design of the arrangement is such that it provides them with substantial all economic benefits of the asset element. The arrangement depends on other parties, not other joint ventures only for settlement of liability. याद आया? So this is nothing but joint operations. 111 आएगा point number 4 में. Would your answer to point number 4 above be different if X and Y sold their respective share of output to third parties? No sir, it will not differ. X और Y किसी को भी बेचे, but don't you think they have rights to the assets of the joint arrangement? Last, assume in point number 4 above, the contractual terms of arrangement were modified so that joint arrangement entity is not obliged to sell the output to X Limited and Y Limited, but was able to sell the output to third parties. Yes, then in that case, we can say this entity is a joint venture and principles of 28 will apply. तो अगर मैं समराइज करूं तो पॉइंट नंबर 1 सर ये ना तो 28 में आएगा ना 111 में आएगा. पॉइंट नंबर 2 111 में फॉलो हो जाएगा. पॉइंट नंबर 3 सर वो डिपेंड करेगा 111 अगर राइट्स टू असेट्स एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स लायबिलिटी है तो, अदरवाइज इट विल बी Ind AS 28. पॉइंट नंबर 4 Ind AS 111. पॉइंट नंबर 5 also Ind AS 111. And point number 6 will be Ind AS 28. Yeah, my friends, you can have just a glance over it.
For a joint arrangement to be a joint operation or a joint venture, it depends on whether the parties to joint arrangement have rights to assets and obligation for liabilities will be joint operation, or whether the parties to the joint arrangement have rights to the net assets of the arrangement, it will be joint venture. Chalo, pahila wala, it does not satisfy. Okay, so does not fit the definition. Dusra wala, it is in the nature of joint operation. Kyun? Because separate legal entity is not formed. No separate legal entity. थर्ड वाला डिपेंड करेगा. थर्ड वाला जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता था और जॉइंट वेंचर भी हो सकता था. फोर्थ वाला, डोंट यू थिंक वो पूरा का पूरा इंडिकेटिव है, डिपेंडेंट ऑन अस. When the rights to assets and liabilities to obligation are not clear from the contractual arrangement, then other facts and circumstances also need to be considered to determine whether joint arrangement is joint operation or joint venture. When the provision of the activities of joint venture is primarily to produce output and the output is available only to the parties of joint arrangement in some predetermined ratio, then it indicates that the parties have substantially all economic benefits of the assets of the arrangement. The only source of cash flows to the joint arrangement is received from those parties through their purchases of the output, and the parties also have a liability to fund the settlement of such arrangement is joint operation. It makes no difference. वापस joint operation ही है भाई. क्यों? अरे हम लोग लेता है, इसका मतलब वो डिपेंड तो हम पे ही है ना. In the last, वो मेरा joint venture था. ठीक है. So we have completed that area. Now let us move on to the another standard. Ind AS 20 along with 109, nothing but Ind AS 20 और 109 कब आता था? 20 के साथ 109 का connection, nothing but loans at concessional interest rate, or it's a kind of no interest. A Limited is engaged in manufacturing of certain specialized chemicals. During the manufacturing process, certain wastewater is produced, which is released by A Limited in the nearby river. To reduce the pollution of rivers, the state government has introduced a scheme with following features. If the manufacturer installs certain pre-approved wastewater treatment plant, the government will provide an interest-free loan equal to 50% of the cost of the plant. Interest-free loan. Such loan will be repayable to government in 5 years from the date of disbursal. The manufacturing availing the benefit of the scheme must treat the wastewater of its factory using the specified plant before releasing it into the river. If this condition is violated, the entire loan becomes immediately repayable to the government along with penalty of 10 lakhs. Cost of wastewater treatment plant to be installed to avail the benefit of the scheme is 50 lakh. A Limited decided to utilize this scheme because if it were to obtain the similar loan from a bank, it would be available at market interest rate of 12%. इसका मतलब वो 12% के हिसाब से हमको कामकाज करना है कि जो भी हम लोन लेगा उसको हम पे करेंगे तो 12% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करना है 5 साल के बाद ही. I hope that's very simple stuff. A Limited applied and obtained the government loan 25 lakhs. A Limited purchased and installed the plant such that it became ready for use on the same date. A Limited has an accounting policy of recognizing government grant in relation to depreciable asset in proportion of depreciation expense. It has determined that the plant will be depreciated over the period of 5 years using SLM. In the month of March, government official conducted surprise audit and it was found that A Limited was not using wastewater treatment plant as prescribed. Accordingly, 31st March, government ordered A Limited to repay the entire loan along with penalty. A Limited repaid the loan with interest and penalty as per the order on 31st March 3. Measure the amount of government grant, determine the nature of government grant and also the accounting treatment principally for the year ended on 31st March 2002. Also determine the impact on profit and loss, if any, on account of revocation of government grant as on 31st March 3. अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो गया है तो क्या करने का है? पहला तो तुम ग्रांट लेगा, जब ग्रांट मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा. So my dear students, in this you have to do two bifurcation. How much amount is government loan and how much amount will be considered as grant. हाँ, grant कितना रहेगा और amount of loan कितना रहेगा. Nothing but
द प्रोसीड्स रिसीव्ड एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। हमको प्रोसीड्स कितना मिला है, तो हमको प्रोसीड्स मिला है 25 लाख एंड द वैल्यू एट विच आई विल बी शोइंग द लायबिलिटी, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, दैट वी कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। और वो गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा, इमीडिएटली भी जा सकता है अगर पूरा बेनिफिट मिल गया और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, या इन द सम रेशियो और इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन इन दिस केस, बिकॉज दिस ग्रांट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर असेट, तो रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन में ग्रांट धीरे धीरे पीएनएल में चला जाएगा। बराबर। अगर रिफंड होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो कहने से मेरा जो भी ग्रांट का अमाउंट रहेगा दैट अमाउंट आई हैव टू डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे बैंक अकाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी नथिंग बट प्रॉफिट और लॉस। या सो वी जस्ट हैव अ सॉल्यूशन हियर as the principles of 20 accounting government grant, benefits of government grant at below market rates of interest is treated as government grant. The loan shall be recognized and measured in accordance with 109 financial instruments. The benefits of below market interest rate shall be measured as the difference between initial carrying value of the loan determined in accordance 109 and the proceeds received. ठीक है, तो वो तो कैसे करने का, तो हम लोग फाइन करेगा 25 लाख हम 5 साल के बाद देने, बिकॉज इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो हमको 14,17,500 पे लोन दिखाएगा और बाकी का डिफरेंस, लोन है 14,17,500, नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 25 लाख, और ये 14,17,500 के लिए अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे एट द रेट ऑफ 12%। सो बैंक 25 लाख, डेफर्ड इनकम 1082 टू लोन being grant initially recorded at fair value, accounting treatment on 31st March 2, ठीक है, तो पहला तो 14,17,500 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, फाइनेंस चार्जेस, डिप्रिसिएशन होगा, और ये जो डेफर्ड इनकम है, जो असेट है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन डेफर्ड इनकम है, उसको हम पीएनएल में लेके जाएंगे। डिप्रिसिएशन इज 50 लाख, 10 लाख, 10,82 will be recognized in the proportion of depreciation. Since depreciation is provided on straight line, ये अमाउंट भी स्ट्रेट लाइन पे जाएगा 2,16,500। ठीक है, सो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया है। अगर रिफंड हो गया तो हमको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ रहा है, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट, मतलब ग्रांट का जो भी बैलेंस रहेगा और जितना भी एक्सेस रहेगा उसके लिए हम लोग पीएनएल को यूज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लोन अकाउंट डेबिट 1778,112 1778,112 कैसे आया, देखो फ्रेंड्स, एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने का रहता था, ईयर, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट लेस पेमेंट, नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस, बरोबर है, ऐसा हम लोग एक टेबल बनाते थे। चलो पहला साल में क्या था हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लोन, इफ यू लुक प्रॉपरली, हमने लोन कितने पे दिखाया था, 14,17,500, और ये 14,17,500 का 12%, 170,100, पेमेंट कुछ नहीं, हाँ, बिकॉज आई हैव टू पे एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 15,87,600, सेकेंड ईयर 15,87,600, उसका 12%, which comes to 17,78,112, बरोबर है, और यही 17,78,112 और आगे जाएगा। सो माय डियर, जब मैं लोन रीपे करने जाता हूं तो मेरा बैंक लोन का बैलेंस है 17,78,112 मिला, बरोबर, 17,78,112 बेस्ड ऑन अमोर्टाइजेशन टेबल, और जो डिफरेंस और जो पेमेंट होगा दैट विल बी 25 लाख। मेरे पास डेफर्ड इनकम का बैलेंस है 649,500, वो तो बहुत इजी है, कितना अमाउंट मैंने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था वो माइनस होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस इज द अमाउंट। ठीक है, ये मेरा लोन का अमाउंट हो गया, और जो पेनल्टी था उसको अलग से दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस टू गवर्नमेंट ग्रांट पेएबल। या सो द टोटल अमाउंट व्हिच गेट्स डेबिटेड टू पीएनएल इज 72,388 प्लस 10 lakhs। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल स्टफ। हाँ, वी हैव लर्न इन द क्लासरूम गवर्नमेंट ग्रांट एट लेसर इंटरेस्ट रेट, लेकिन इसका रीपेमेंट होता है, इसका बारे में एक बेसिक सम आ गया अपने पास इधर। Now let us move on to another standard.
ABC Limited issues 4% 1 lakh OCPS optionally convertible preference shares at a face value of rupees 100 per share on 1st April 2001, and these are redeemable after 5 years, that is on 31st March 2006. Dividend is non-cumulative. Each preference shares entitles the holder to 10 equity shares, and the preference shares are optionally convertible by the holder anytime until the maturity. How will the preference shares be classified at initial recognition, assuming that a comparable instrument carries a market interest rate of 7%, provide journal entries for year 1? Will the classification be changed in case the likelihood that OCPS will be encashed at the end of maturity period? So my dear students, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहने से ये तो अपना कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, नथिंग बट इसमें इक्विटी भी हो सकता है, मेरे हो सकता है इन द सेंस है, इक्विटी है और लायबिलिटी दोनों है। एक ही पॉइंट एकदम अपने लिए चैलेंजिंग है और वो है कि सर ये लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे ढूंढने का? शुड वी कंसीडर द कैश फ्लोज ऑफ डिविडेंड्स आल्सो एंड द मैच्योरिटी वाला भी कैश फ्लो कंसीडर करूं? ऐसे करने का नहीं। द रीजन इज जो डिविडेंड का कैश फ्लो है ना, दे आर पार्ट ऑफ माई इक्विटी। मतलब ऐसा कैसा सर? बिकॉज आई एम हैविंग नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। डोंट यू थिंक डिविडेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव? अगर डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव है बेटा, तो मैं जब रिकॉग्नाइज करेगा व्हाट वुड बी द लायबिलिटी अमाउंट, 5th ईयर पे रिडम्पशन होगा। 5th ईयर पे कितना रिडम्पशन होगा? 1 लाख OCPs इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 7% फॉर 5th ईयर, बस खत्म। ये अमाउंट पे मेरा लायबिलिटी दिखेगा और फिर वो अमोर्टाइजेशन टेबल, और जो पैसा मिला है और द वैल्यू एट विच लायबिलिटी इज शोन, डिफरेंस इज नथिंग बट इक्विटी। अगर ये काम चलता रहा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बीच में वो कन्वर्ट करवाता है, तो कैन आई से वॉट एवर इज द बैलेंस दैट विल बी यूटिलाइज फॉर इश्यूइंग द इक्विटी। अगर कन्वर्ट नहीं करवाता है, एंड तक पहुंच जाते 5 ईयर और वो बोलते हैं मेरे को पैसा चाहिए, तो कोई बात नहीं, लायबिलिटी ऑलरेडी मेरा 1 लाख, आई एम सॉरी 1 लाख इंटू 100 दैट इज 1 करोड़ उधर आ ही गया रहेगा और उसका बैंक में पेमेंट हो जाएगा। दिस आर वेरी सिमिलर सिंपल क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन इन द क्लासरूम डिस्कशन आल्सो। या फ्रेंड्स, सो लेट्स हैव एन ग्लांस ओवर इट। ये तो अपना, हाँ, the OCPS is redeemable at the end of 5th year. Hence, preference shares contains a liability component. Further, the dividend is payable on preference shares is non-cumulative. The holder may not be able to convert the preference shares at the option anytime until maturity. May also be able to convert it. States that non-cumulative dividend paid at the discretion of the issuer entity is part of equity. बराबर है? फिर recognition of component of financial instrument that creates a financial liability and grants an option to the holder the instrument to convert into fixed number of instruments, equity instruments as a compound financial instrument. या दोनों कंपोनेंट है। चलो, तो कितना है? 60% के हिसाब से अमाउंट आता है 71,29,862 फाइनेंशियल लायबिलिटी, नथिंग बट 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 7% फॉर 5 ईयर्स। हाँ, मस्त फॉर्मूला डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, और बाकी का मेरा इक्विटी है। और फिर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 71,29,862 को 7% के हिसाब से हम लोग क्यूमुलेटिव करता रहेगा। Whenever the option is exercised by the holder to convert it into equity shares, तो जिस दिन भी ये पास होएगा तो हमारा OCPS फाइनेंशियल लायबिलिटी टू OCPS इक्विटी, और इक्विटी के अंदर वो अमाउंट ऑलरेडी है ही। पहला कितना अमाउंट है? 2870,138, बाकी का इधर का ऐड होएगा, पूरा का पूरा अमाउंट किधर चला जाएगा? हाँ, इक्विटी इश्यू में चला जाएगा। या convertible finance, the classification of liability and equity component is not revised as a result of change in likelihood of conversion option will be exercised or not. ये change नहीं करते, but obvious है।
अब समझो एंड में उसने पेमेंट मांग लिया तो कहना ही से मेरा एंट्री हो जाएगा ओसीपीएस दैट इज 1 करोड़ टू बैंक, खत्म। ये जो 654 रहेगा ना, दैट इज नथिंग बट माय डियर स्टूडेंट्स बैलेंसिंग फिगर। 10 लाख इधर लेने का, 654 इज द बैलेंसिंग फिगर। या सो दिस एंड्स अवर 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट। लेट्स कम टू अनदर स्टैंडर्ड दैट इज 101। जीजी लिमिटेड, a listed company, prepares its first financial statements for the year ended on 31st March 2003. First Ind AS wala financial statements. The date of transition is 1st April 2001. The functional and presentation currency is rupees. The financial statements as at and for the year ended on 31st March 3 contains an explicit and unreserved statement of compliance with Ind AS. Previously, it was using Indian GAAP, that is AS, as a base. It has already published its first interim results for quarter 1, quarter 2 and quarter 3 of 2-3 current year wala. In accordance with Ind AS 34 and Ind AS 101, the interim financial report included the reconciliation of both the total comprehensive income and of the equity that are required by Ind AS 101. Since issuing the interim financial report, its management has concluded that one of the accounting policy choices applied at the interim period should be changed for the full year. How GG Limited deal with this change in accounting policy under the Ind AS framework? So now, what is my transition date? Can I say that is 1st April 2001? तो अभी हम लोग ने क्या किया है, हमने एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है। Of course, the principles of 101 will override the principles of Ind AS 8. A theoretical part, I will just read it off, not that much challengeable. The first annual Ind AS financial statements are prepared in accordance with specific requirements of 101, subject to certain specified exemptions and exceptions. I hope you remember those exemptions which are available. Deemed cost of acquisition with respect to 16, 40, 38, फिर वो Ind AS 21 में हमको पैरा 46A को आगे लेके जाना अलाउड है. These are the exemptions which are allowed by 101. And exceptions, para 7 of 101 required that entity to use same accounting policies in its opening Ind AS balance sheet and throughout all the periods presented. This overrides Ind AS 8 requirements for disclosure about changes in accounting policies and do not apply in an entity's first Ind AS financial statements. GG Limited should include an explanation of change in policy that it has made since the interim financial report in the notes to the annual financial statements in accordance with para 27A of 101. The disclosure note is likely to include information similar to what Ind AS would otherwise require to help the users of financial statements to understand the changes that have been made. हमारा तीसरा क्वार्टर के बाद का. The entity should also ensure that the reconciliation of total comprehensive income and of the equity presented in first Ind AS financial statements is in accordance with the principles of 101 are updated from those included in interim financial reports to reflect the amended accounting policy. ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट है उसमें तो शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान 102 न्यू एज टेक्नोलॉजी has entered into a following share based payment transaction. On 1st April, New Age Technology Limited decided to grant share options to its employees. The scheme was approved by the employees on 30th June 2001. New Age Technology Limited determined the fair value of the share options to be the value of the equity shares on 1st April 2001. On 1st April 2001, New Age Technology Limited entered into a contract to purchase IT equipment from Bombay Software Limited and agreed that the contract will be settled by issuing equity instruments of New Age Technology Limited. New Age Technology Limited received an IT equipment on 30th July 2001. The share-based payment transaction was measured based on fair value of the equity instrument as on 1st April 2001. On 1st April 2001, New Age Technology Limited decided to grant the share options to its employees. The scheme was approved by the employees on 30th June 2001.
The issue of shares options was, however, subject to same being approved by the shareholders in the general meeting. The scheme was approved in the general meeting held on 30th September 2001. The fair value of the equity instruments for measuring the share-based payment transaction was taken as 30th September 2001. Identify the grant date and measurement date in all the three cases of share-based payment transaction entered into by New Age Technology Limited, supported by appropriate rationale for the determination. See my friends, when we, of course हमारे हर एक क्वेश्चन में अपने को तो फेयर वैल्यू दिया ही रहता था, लेकिन इंड एस 102 क्लैरिटी भी देता है कि किस दिन का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने का. नाउ व्हाट इज अ ग्रांट डेट? कैन आई से ग्रांट डेट इज नथिंग बट द डेट on which contractually both the parties, generally in case of employees and the entity, become committed to that particular share based payment plan. और अगर कहीं पे अप्रूवल का जरूरत होता है, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला हाँ भाई हम लोग ये शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान देगा, प्रोवाइडेड हमारा शेयर होल्डर्स हाँ बोलेगा तो, सो देन द ग्रांट डेट इज द डेट ऑन विच द शेयर होल्डर्स अप्रूव ना. So what is the grant date? Grant date is the date on which both the parties to a share based payment plan agree to the significant terms and conditions of that plan. That is the grant date. Measurement date generally between employees और entity होता है, तो grant date को ही हम measurement date बोल देते हैं. जिस दिन grant होता है वही हमारा measurement date होता है. That is the value of the fair value of the plan, और फिर उसके हिसाब से हम लोग accounting करता है. लेकिन अगर हम शेयर्स मींस शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इज टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, आउटसाइडर्स का है, इन दैट केस मेजरमेंट डेट इज द डेट ऑन विच आई रिसीव दोज गुड्स और सर्विसेज. दैट इज द फेयर वैल्यू, दैट इज द डेट ऑन विच आई डिटरमाइन द फेयर वैल्यू. अगर इस क्वेश्चन में देखेगा तो 1 अप्रैल 2001 को ग्रांट शेयर ऑप्शन टू एम्प्लॉय को दे रहा है. द स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयज ऑन 30th जून. अगर एम्प्लॉयज 30th जून को अप्रूव कर रहा है, मींस दे बिकम कमिटेड, आई बिकम कमिटेड, बोथ ऑफ देम आर कमिटेड ऑन 30th जून ओनली ना. सो द ग्रांट डेट इज 30th जून, एंड इफ द ग्रांट डेट इज 30th जून माय डियर, डोंट यू थिंक मेजरमेंट डेट विल आल्सो बी 30th जून फॉर एम्प्लॉयज, बिकॉज एम्प्लॉयज है. बट सेकेंड वाला देखो, इधर हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है, कॉन्ट्रैक्ट कब किया? 1 अप्रैल को, बरोबर है कि हम तुमसे सॉफ्टवेयर खरीदेगा. इक्विपमेंट रिसीव कब किया? 30th जुलाई को. So grant date is 1 April only, उसमें कोई टेंशन नहीं, because we become committed to the plan. But measurement date क्या हो जाएगा? Measurement date is nothing but the date on which I get control over that particular asset, or I get those services and get benefits from those services. तो 30th जुलाई हो जाएगा. तो इसके लिए measurement date is 30th जुलाई, सेकेंड वाले पॉइंट के लिए. थर्ड वाला पॉइंट 1 अप्रैल हमने डिसाइड किया है ग्रांट शेयर ऑप्शन टू द एम्प्लॉय. द स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑन 30th जून 2001. The issue of share option was, however, subject to same being approved by the shareholders in the general meeting which happened on 30th September. इसका मतलब कहना है से मेरा मेजरमेंट डेट और ग्रांट डेट दोनों 30th September हो जाएगा इस केस में, बिकॉज हम लोग ने ये एक टाइप का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ मेरा और मेरा एम्प्लॉयज का कि देखो सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर हम देंगे, शेयर होल्डर अप्रूव नहीं किया तो खत्म हो गया. तो ग्रांट डेट इज 30th of September and measurement date will also be 30th September. Yeah, so the grant date is the date on which the entity and the other party, including employer, agree to a share-based payment arrangement, being when the entity and the counterparty have shared understanding of the terms and conditions of the arrangement. At the grant date, the entity confers on the counterparty the right to cash, other assets or equity instruments of the entity, provided the specified vesting conditions, if any, are met. If that agreement is subject to approval process, then grant date is when the approval is obtained. Measurement date, the date at which the fair value of the equity instruments granted is measured for the purpose of this Ind AS. For transaction with employees and other providing similar services, the measurement date is the grant date. For transaction with parties other than employees, the measurement date is the date when the entity obtains the goods and services. Yeah friends, you may just have a glance. Answer वही था जो हमने डिस्कस कर डाला. Yeah, it has been presented in a beautiful manner by our institute. I hope you got the point. Okay friends, let's move on to the another question. And total हमारा 20 क्वेश्चन है अब की बार RTP में. Let's have question number 17. Oh, ये तो solution है इसका. हाँ, 17th वाला क्वेश्चन. कुछ नहीं. वो
टेस्ट वाला क्वेश्चन है, 10% क्राइटेरिया टेस्ट है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, सबका रिपोर्टिंग नहीं करना है। XYZ has 8 segments, namely A, B, C, D, E, F, G, H. The information regarding the segments for the year is 31st March is as follows: A, B, C, D, E, F, G, H. उसका एक्सटर्नल सेल्स दे दिया, इंटर सेगमेंट सेल्स दे दिया, टोटल सेगमेंट सेल्स दे दिया, सेगमेंट रिजल्ट्स, प्रॉफिट्स, सेगमेंट असेट्स. Identify which of the above segment out of A and H would be considered as reportable segment under XYZ. I hope you remember वो क्राइटेरिया था हमारा, अगर सेगमेंट रेवेन्यू is 10% or more of the total segment revenue. दूसरा क्राइटेरिया था अगर सेगमेंट रिजल्ट either profit or loss, whichever is higher in absolute terms, is 10% or more, then the total of means जो भी अगर segment result is 10% or more, किसका 10% or more? Higher of segment profits, all segments in profits, all segments in losses. याद आ रहा है? तीसरा था segment assets का point. Of course वो absolute terms में negative positive net off नहीं करते थे results में. तीसरा था segment assets are 10% or more. So my dear students, यहाँ पे हमको सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा. सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू का देखते हैं. हाँ, बाद में स्टैंडर्ड ये भी बोलता है कि भाई ये जो भी सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो गई है, व्हाटएवर सेगमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये परफेक्ट हो गया, काम बरोबर है. लेकिन जो सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो गया है उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू देखो, ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू देखो, एंड दैट एक्सटर्नल रेवेन्यू हैज टू बी 75% of my enterprise revenue. If it is there, no issues. If it is not, we have to add more segments. So let us check this all out. Yes, my dear students. पहला segment revenue. Total segment revenue कितना है? 100 plus 315 plus 45 plus 15 plus 15 plus 50 plus 25 plus 35. That is nothing but 600 है. 600 आ रहा है. उसका 10% 60. कौन फुलफिल करता है 60 का क्राइटेरिया? कहने से ए और बी फुलफिल कर पा रहे हैं. देखो 100 और 315, सो ओनली ए एंड बी आर फुलफिलिंग सेगमेंट रेवेन्यू का क्राइटेरिया. फिर सेगमेंट रिजल्ट का क्राइटेरिया. एग्जाम में ऐसा नहीं लिखने का, हाँ ये तो अपन डिस्कशन कर रहा है. तो ऑल सेगमेंट्स इन प्रॉफिट्स, ऑल सेगमेंट्स इन लॉसेस. चलो ऑल सेगमेंट्स इन प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट को उठाते हैं. 5 plus 15 plus 8 plus 5 plus 7, all segments in profit is 40. All segments in loss, 90 plus 5 plus 5, all segments in loss is 100. बरोबर है, 100 है. ये लॉस वाले, ये प्रॉफिट वाला, ये लॉस वाला. हम किसको उठाएंगा? विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म्स 100. 100 का 10% कितना होता है? 10. चलो 10 देखो, इन एब्सोल्यूट टर्म्स 10 देखने का है. किसका 10 का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? कहने से बी सी, बी एन सी आ रहे, बी एन सी. सो ये क्राइटेरिया बी और सी फुलफिल कर रहा है. अब आते हैं सेगमेंट असेट पे. सेगमेंट असेट 10% ऑफ योर टोटल असेट्स फ्रेंड्स. कितना है 10% ऑफ टोटल असेट्स? 15 plus 47 plus 5 plus 11 plus 3 plus 5 plus 5 plus 9. 100. 100 का 10%, 100 का 10% बोले तो 10 ही. 10 कौन फुलफिल कर रहा है? किसका असेट 10 है? यस फ्रेंड्स, चेक. ए का है, बी का है और डी का है. ए बी डी. So A, B, D. Based on this, all three, can I say A, B, C, D ही reportable है? Segment A, Segment B, Segment C और Segment D, ये चार ही reportable होगा. अब ये चार का external sales देख लो. इनका external sales कितना है? A, B, C, D का तो 255 plus 15 plus 10. External sales is 280. तो इनका external sales is 280. चलो अब ये देखने का, क्या ये 75% है of my enterprise revenue? Nothing but my total 255 plus 15 plus 10 plus 15 plus 50 plus 25 plus 35, that is 405. So वो टोटल अपना 405 है. तो 405 280 into 100,
Friend, it is not coming to 75%. It is somewhere around 69%. मतलब कहने से further more segments have to be added. हमको और ऐड करना पड़ेगा. चलो ठीक है. चलो क्राइटेरिया सेगमेंट रेवेन्यू ए और बी ने फुलफिल किया, बरोबर है, ए और बी फुलफिल करते हैं. आंसर है प्रॉफिट और लॉस बी और सी ने फुलफिल किया. बी और सी, यस, बी और सी ने ही फुलफिल किया. और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद असेट ए बी और डी ने फुलफिल किया है, बरोबर है, ए बी और डी ने फुलफिल किया है. ठीक है, सो दिस, और ये 69.13% है, मतलब हमको और सेगमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा. Based on the above three criteria, the reportable segments A, B, C and D, however 75% test for external should also be checked. So it is 280 divided by 405, it comes to 69. हमको चाहिए 75%, तो और segments को add करना पड़ेगा. Hence in the above scenario, additional operating segments need to be identified as reportable segments till 75% test is satisfied. Even if those segments do not satisfy the quantitative threshold criteria. Here friends, so this is my question on segment reporting. चलो, Ind AS 38 intangibles के साथ relate हो रहा है. D Limited is a leading publishing house. Purchase copyright of a book from its author for publishing the same. As per the terms of the contract, if D Limited chooses to make the payment upfront, then copyright consideration of rupees 80 lakhs is to be paid, which in line with general practice is in such arrangement. However, the contract also provides that in case D Limited chooses to pay consideration after 2 years, then he will be required to pay 1 crore. At what value should intangible asset be recognized as per Ind AS 38? Can I say the intangible asset should be recognized at 80 lakhs only? In both the cases, you choose it to pay now, then also 80 lakhs. If you choose to pay after 2 years, then also 80 lakhs, because इसको हम बोलेंगे deferred consideration. If it is deferred consideration, we always recognize it at its today's value. और जो भी difference between deferred consideration and the amount we actually pay is referred as borrowing cost. और वो borrowing cost को हम लोग क्या करते हैं, capitalize करते हैं अगर underlying asset is qualifying asset. हाँ, in this case 20 lakhs ही है, अंडरलाइंग असेट कोई क्वालिफाइंग असेट जैसा दिखता नहीं है, तो वो एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा. लेकिन 20 लैक्स 2 साल में एक्सपेंस ऑफ होगा बेस्ड ऑन योर इम्प्लिसिट रेट इन दिस. इट इज नॉट 10 लाख चला जाएगा, इम्प्लिसिट रेट. एज पर पैरा 32 ऑफ Ind AS 38, if payment for intangible asset is deferred beyond normal credit period, its cost is cash price equivalent. The difference between this amount and total payment is recognized as interest expense over the period of credit unless it is capitalized accordance with Ind AS 23 borrowing cost. In the given case, if the payment for intangible asset copyright is deferred beyond normal credit terms, the cash price equivalent is 80 lakhs should be considered at its cost and intangible asset will be recorded initially at this value. The difference between 20 lakhs between the cash price equivalent and the total payment should be recognized as interest expense over the period of credit unless it is eligible for capitalization. ठीक है friends, simple था ये point. Let us now move on to question number 19. Ind AS 10 के साथ है, events occurring after balance sheet date. XYZ sells goods to its customers with a promise to give discount of 5% on list price of the goods provided that the payments are received from the customer within 15 days. XYZ sold goods of rupees 5 lakhs to ABC between 17th March 2001 and 31st March 2001. ABC Limited paid dues by 15th April 2001 with respect to the sales made between 17th March and 31st March. Financial statements were approved by issue on 31st May. State whether discount will be adjusted from sales at the end of the reporting period. बोलो भाई, डिस्काउंट को एडजस्ट करने का कि नहीं करने का? तो डिस्काउंट एडजस्ट करने का कि नहीं करने का? ऑब्वियसली करने का. क्यों रे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 115 को भी इसमें साथ में लाना पड़ता है बिकॉज ट्रांजैक्शन प्राइस. तो डिस्काउंट जो हमको मिलने का, जो हम देने वाला है, डोंट यू थिंक इंडिकेट्स वेरिएबिलिटी इन द ट्रांजैक्शन प्राइस?
So obviously we need to make estimates with respect to whether this discount will be availed or not. यहाँ पे क्या हो रहा है, 31 मार्च को this person को हमने सेल कर दिया है एंड दैट पर्सन इज इन अ इफ इट पेज इन विद इन 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो ये कंडीशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है और फिर उसने पे भी कर दिया, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ estimating the transaction price, or I can say at the time of recognizing revenue, this is to be considered because the payment by the customer confirms the condition existing on the balance sheet date. Don't you think it provides additional evidence with respect to the conditions of payment of discount? तो मेरे ट्रांजैक्शन प्राइस के उसमें हमको इसको एडजस्ट करने का है। As per Ind AS 115, if the consideration promised in the contract includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of consideration to which the entity will be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. In the instant case, the condition that sales have been made exists at the end of reporting period, and the receipt of payment within 15 days time after the end of reporting period and before the approval of financial statement confirms the discount is to be provided on those sales. Therefore, it is an adjusting event. Accordingly, XYZ should adjust the sales made to ABC with respect to discount of 5% on the lease price. मतलब ये मेरा variable consideration है जो मैं consider करेगा. Of course, because at the time of recognizing revenue, only we adjust for the variability. Okay, question number 20, which is pertaining to Ind AS 16. On 1st Jan 2001, an entity purchased an item of equipment for 6 lakhs, including 50,000 ka refundable purchase tax. The purchase price was funded by raising a loan of 6 lakh 5,000. In addition, entity has to pay 5,000 in loan raising fees to the bank. The loan is secured against the equipment. In Jan 2001, entity incurred cost of 20,000 in transporting the equipment to the entity's site and rupees 1 lakh in installing the equipment at the site. At the end of the equipment's 10-year useful life, the entity is required to dismantle the equipment and restore the building housing the equipment. The present value of cost of dismantling the equipment and restoring is estimated to be 1 lakh. In Jan 1, the entity's engineer incurred following cost in modifying the equipment so that it can produce the products manufactured by the entity. Material 5565, depreciation on plant and equipment used for modification 15,000. In Jan 1, the entity's production staff was trained in how to operate the new equipment. Training cost included 7,000 for this and labor 3,000. In Feb 2001, the entity production team tested the equipment and engineering team made further modification necessary to get the equipment function as intended by the management. The following costs were incurred. Material net of 3,000 recovered from sale of scrapped output 21 और labor का 16,000. The equipment was ready for use on 1st March. However, because of low initial order level, entity incurred loss of 23,000 as an operating the equipment during the March. Thereafter, the equipment operated profitably. What is the cost of the equipment? Yes, friends. क्या होगा equipment का cost? पहला तो borrowing cost capitalize करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का. क्यों? सर 1st जैन को तो चालू काम काज किया, 1st मार्च को तो सब कुछ हो गया, 2 महीना है, 2 महीना should not be considered as substantial period of time and hence the asset is not a qualifying asset, and because the asset is not a qualifying asset, borrowing cost will not be capitalized. कौन सा खर्चा कैपिटलाइज होएगा? हाँ बच्चा लोग, यस, ये जो 6 लाख है वो तो होगा, लेकिन इसके अंदर रिफंडेबल परचेज टैक्स है, तो जो टैक्स का मुझे रिफंड मिलने वाला है दैट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट. मतलब 6 लाख में से हम लोग 50,000 माइनस कर देगा. The purchase price was funded by raising a loan of 6 lakh 5,000. ठीक है, लोन लिया 6 लाख 5,000 का. In addition, the entity has to pay 5,000 as loan raising fee. ये 5,000 जो loan raising fee है वो भी borrowing cost ही है. It will be included in the fair value of the loan. हाँ, तो वो उधर ही चला जाएगा. Entity incurred cost of 20,000 in transportation. कहने से ये ऐड होगा 20,000.
1 lakh in installing the equipment at the site, ये भी हो जाएगा मेरा. At the end of the equipment 10-year useful life, the entity is required to dismantle the equipment. Can I say present value of an obligation, present value of decommissioning liability? हाँ, तो it will be at present value. तो 1 lakh भी ऐड करना है. वाव. हमारा कॉस्ट और इनकर हुआ टू मॉडिफाई द इक्विपमेंट सो दैट वी कैन प्रोड्यूस ब्रिंग इट इन आवर इंटेंडेड वे. तो 55 प्लस 65 प्लस 15 ये तीनों भी ऐड हो जाएगा. हमने हमारा प्रोडक्शन स्टाफ को ट्रेनिंग दिया. माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इक्विपमेंट इन वर्किंग कंडीशन. हाँ, ये खर्चा ऐड नहीं होएगा. इक्विपमेंट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है. सो दिस विल नॉट बी एडेड. February में एंटिटी का प्रोडक्शन टीम टेस्टेड द इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग टीम मेड फर्दर मॉडिफिकेशन नेसेसरी टू गेट द इक्विपमेंट एट इज इंटेंडेड. द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड. कैन आई से दिस इज टेस्ट रन. टेस्ट रन हुआ है. 3000 माइनस करने के बाद 21,000 का मटेरियल है. ऑफ कोर्स वो टेस्ट रन माइनस हो जाते हैं तो 21,000 ऐड करेगा. लेबर का 16,000 भी ऐड करेगा बिकॉज दिस आर ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर टेस्ट रन. सो बोथ ऑफ देम विल बी एडेड. With the equipment was ready for use in March 1, however, because of low initial order levels, the entity incurred a loss of 23,000. My dear students, don't you think ये operating loss है, initial operating loss? They never form part of my cost of PPE because they are never necessary. We should only bring those expenditure which are necessary for the item of PPE to be used. जिस काम के लिए जो इंटेंशन है उसके लिए वो रेडी हो जाना चाहिए था. 6 लाख माइनस 50 तो 550 लोन का नहीं आएगा. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है. वेरी गुड. इंस्टॉलेशन भी है. एनवायरमेंटल कॉस्ट 1 लाख वो भी है. प्रिपरेशन कॉस्ट नया हमारे हिसाब से मॉडिफाई किया 55 प्लस 65 प्लस 15 डिप्रिसिएशन. असेट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन या वो भी आता है. ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज this is not necessary to bring the PPE into working condition. Cost of testing, yes, 21 plus 16 that is 37,000. 3,000 minus होने के बाद ही है 21,000. Operating loss भी नहीं आएगा और borrowing cost भी नहीं आएगा. So my dear students, the total cost of your PPE is 9,42,000. So my dear students, this is the end of your RTP discussion. May 22 attempt का जो RTP आया है, I have already discussed. Many good sums have been given. All the best, my dear students. Wish you success in all your exams. Thank you very much. Bye bye.